So friends, we'll begin. Another reform in the market, if you may say, we are entering into full implementation of the allocation of client collateral. So segregation started quite some time back, and now we have moved to allocation. And again, it is a graded kind of implementation. Today, with us on our program, we have speakers from BBF. We have also speakers from ICCL and NCL for an interesting Q&A session. So let me begin. When did this start from? This started from the SEBI Circular of July 2021, which introduced the concepts of segregation and allocation after a discussion paper. Segregation has already begun from 1st October 21. We had some time to get systems in order, and the penalties have begun from 16 December. Allocation, the process has already begun from 2nd May. Part penalty has begun from, will begin from August, and then after 6 months, there'll be some serious penalties even for intraday, which will go ahead. Always the favorite broker question: extension milega kya? Now, friends, we have had live systems for almost 3 months now. These systems are working fine. Everybody who's been uploading and downloading data is saying this is fine. Though the load is lower, it will go up, but they work. Second, the penalty initially, again, it's a stage penalty. It's only for end of day shortages for allocation and not for the intraday peak. Though the other peak margin is there, so it's not a waiver. Please don't take it like. So if anybody says that we should be asking for the extension, there's no logical ground for doing so. So we've discussed this in BBF and said this would be totally inappropriate to ask for any extension. Unless some system crashes or something, we'll see how to handle it. Before we go to allocation, people always get confused between segregation and allocation. So I need to give a short revision. Segregation is end of day records, right? What are the assets you have received from clients in terms of funds and securities, and where are they lying? Are they lying with you as a TM? It has gone with the claim number. It is lying with the CC. That is all. If you upload incorrect data in this end of day file, there's some significant penalty. If you miss the T+5 deadline, there's a significant penalty. This segregation we are all doing, I think we all more or less stabilized the system. Allocation is different from segregation. It looks very similar, but believe me, it is fundamentally different. I'll come to that. The way it has been proposed to be implemented, that's what we feel. Before we move again to allocation, we are all doing end of day margin reporting, MG13, MGTM, whatever, on T+5 basis. That doesn't change. We'll have to continue doing it just because allocation has begun with right earnest. At least I'm sure till 1st February 23. After that, probably it will be a double file, and probably we'll make a representation to the authorities. Please get rid of this file because we are doing a pre-allocation. Having said that, this is remaining. This is not stopping. This will continue. This won't stop. And please continue doing what you've been doing. Now on allocation, the issue at hand. What does the allocation want? Allocation wants that before the client trades, we need to allocate the amount in advance to the claim corporation. And if what you have allocated is less than what the upfront margin should have been, then there's a penalty. Now, what is upfront margin? In cash segment, there's a 20% flat rate. And in all the derivatives, various derivative segments, it's SPAN plus ELM. Just extract of the SEBI circular of July 2021, which says, which talks about penalty, effective deterrent mechanism. Now, what is happening from 1st August? From 1st August, CC will levy penalty only for the end of day margins, not for intraday. The intraday is going to happen after 6 months. So, just a minute. All right. So, sorry for the small interruption. So, whatever you've allocated at the end of the day, if the margin, upfront margin due is less than that, we are perfectly all right. If no, then there's going to be penalty.
Going ahead after 6 months, this will get extended even to the intraday positions. But for today's webinar, we are sticking only to the ERD issues. It is a problem after 6 months, which we'll handle at the appropriate time. Now, first understand the speed of allocation. For all stockbrokers, our offices are in two buckets. If you look at the funds, bucket one is what we receive from the clients. We receive securities as margin pledge. We can receive cash, FDs, BGs. Early paying is also kind of receipt that we have. In case of 3-in-1 account, is bank lien marking in bank account. There are checks that we receive which may not be cleared. G6. Now we give limits to our client based on what we receive in bucket one, and many of us give it across segments. Very few give segment-wise limit, we give across segments. But bucket two is what we are given to CCs. CCs take cash, FDs, bank guarantees. Security is only in the form of repledged shares. And then CC gives us limit. Again, they give us limit segment-wise and they take the deposit segment-wise. So there's a fundamental difference in bucket 1 and 2. So what authorities want in allocation is step 1, take before the client trades, convert all the bucket 1 components into a single number. And then of all the money you've deposited into with the CC as bucket 2, you have to allocate amounts. For example, we have client ABCDE with 100 rupees each in step A, and we have deposited 1,000 rupees with the CC. So we have to allocate 100, 100, 100 to ABCDE, or 100 or less. You cannot allocate more than what you have received in in bucket 1. We have taken a lot of examples going ahead to clarify. So please bear with me. If you're confused, you can always go back to the video on YouTube and read it. Now in allocation, the shares which are replaced to CC are auto-allocated. So that is something that we don't need to manually allocate. But everything else has to be manually allocated. Now, again in replace securities, there is a googly there. Now, if the client pledges securities worth rupees 1 crore to us, after haircut, say it is worth rupees 1 crore. And then after that, we replace it with CC. It is not necessary that CC may give a 1 crore limit. For the same securities, CC may actually give 0 limits. For example, if the member-wise limit is hit, or if the market-wide limit is hit, which are the prudential limits. In some securities, the CC haircut may be higher than the VAR haircut. So if such a situation happens, we'll have to manually allocate the capital from our pro funds to those client codes. Again, lots of new ideas, but so nothing communicates as well as examples. So we have given a few examples. The assumptions are, we have taken all self-paying members. We have assumed all segments in the same CC. And the valuation in the examples are post haircut. And I keep on repeating, we're talking only about EOD issues here. Intraday issues after 1 month, 2 months, 3 months, we'll discuss. So let's take example 1. Client has given to broker 100 rupees cash, 100 rupees worth of securities which are not replaced, and securities of another 50 which has been replaced. Now 50 is auto allocated by clearing corporation, assuming we get the full limit. Now for the balance, we are required to manually allocate anything between 0 to 200. Ideally, it should be 200. Jo client ka paisa aaya, either it is lying in the bank account or it's lying with the CC. If it's lying in the bank account, of course, we can't allocate. But if it is lying with the CC, it is always appropriate that it's allocated to the client. But that would be probably a good practice. So in this example, suppose a client trades for up to 50 rupees margin. There's no penalty because enough replaced securities are available. No dikkat. But if the client trades in such a way that the margin is between 50 to 250, now for the difference above margin above 50, we need to allocate something in advance. In this case, obviously, for 6 months before the end of day, but in going ahead, it will be in advance. And if the client trades for more than 250 margin, you cannot allocate more than 200 because that's what you received. So, and penalty is going to be levied, and that's going to happen. I'll take you through more examples just to clarify. Let's take another situation where the client has given 100 cash, 100 securities, and 100 securities that we replaced. But then there's some prudential limit was an issue. So CC has not given us limit. So what do? We are required to manually allocate anything between 0 to 300. Now there's they could lead to complications because if we have allocated say 300 manually,
Suddenly some limit gets opened up. Some client has unpledged and that we have extra limits. So we end up extra limits get allotted to the client. That would be a violation. Also, the valuation issues, because the price and where changes during the year. But this is a rare occurrence, can happen. It is not a. It is a kind of end of the issue, because we may assume some number and the final number will be off by 0.5% or 1%. So probably you'll have to do some extra kind of allocation in advance with the hope that everything falls in place. Now again, the client has given nil cash margin to the broker, and client says shares worth ₹100 and early pay is done. And against that, he buys shares of margin worth ₹50. Now, in even this case, we'll need to allocate anything between 0 to 100. Because as you are aware, the current requirement says that if a client does early paying, up to 50% of the early paying value can be considered as margin collected for the T day, and we are in T day here. You can allocate anything with 0 to 80. Please allocate at least 50, otherwise there'll be penalty, and or whatever you do. You can't allocate more than 80. Now again, client provides securities worth ₹100 which are replaced, but CC gave only 40 rupees. Up to 60 we can allocate. I'm just repeating some ideas so that everybody is clear. Now client sells securities worth ₹100, EPI is done, and he takes position in the derivative segment with margin dues of 60. Then we will have to allocate. We can allocate up to 80 rupees, but we have to allocate in the derivative segment. Allocation in the cash segment is not going to help us. So for those brokers who are giving across segment limits, you are in deep trouble. Unless you have good systems to do all this, it's going to be for small amounts. It's okay. Larger amounts, it may cause some real complicated situation. Another example: the client has pledged securities. He mentions all segment, and we have further repressed in the cash segment. But the client has taken position in derivative segment, and there's a margin due of 80. Kya kare? Now either you do a transfer of replace from cash to derivatives, or you have to allocate an additional 100 in derivatives. Up to 100. फीडबैक आया थोड़ा सा, अगर अपन स्लो जाएंगे तो I think. Oh, I'm so sorry, मैं थोड़ा slow में हो गया. Thank you. All right. So client is anyways gone till here. We'll move ahead a bit slowly. Another example. Client has, now this is typical in 3-in-1 accounts where the money is marked as lien, and they're moved by the broker at the end of day or T+1 basis as per the processes. Suppose a client has taken a position and 100 rupees has been blocked and the margin due is 25 rupees. Now what broker has to do is he has to allocate in advance, and he can allocate up to 100 rupees. Even if the money is not come, the lien is marked, so he has to allocate. If he doesn't, there'll be penalty. NRE PIS account, again this question. He does a trade. We give the contact notes to the bank, which is the authorized dealer. I think that's what they're called. And the money comes to us on T+2 basis. We have to allocate in advance whatever the margin due is. But assuming that the money does come on T+2, and this is a problem. But if money doesn't come, then the deemed margin collection is no longer in place. But usually it doesn't happen. NRE PIS account, the banks are very efficient. They do transfer the money. In fact, many do it on T+1 itself. But it doesn't happen, then probably you've done a violation, wrong allocation. You'll need to explain to the inspection team, bas ye kya hua tha. Another thing, suppose we take a broker as a self-claim member in the cash segment and trading member under some other professional claim member in the derivative segment. And the client has pledged securities, and we have the broker is replaced further in the cash segment to the CC, and client is taken position in derivative segment. Now we don't have inter-segment transfer in these cases. So you unpledge from the cash segment and then pledge it to the PCM, or allocate extra 100 in the derivative segment. That is what we'll need to do. If this was not complex enough, there's some more complications. I call it complication 1, 2, 3, RRM 50/50, and cannot reduce if used issue. I'll go one by one. Now, SEBI circular point 26 talks about RRM, just to extract. What it means is when a client trades
CC will first use the collateral of the client, funds and securities, whatever is available, allocated. If there's excess use, the client trading won't stop. The extra will be taken from the pro or own account. It won't be taken from any other client. So the Peter Paul issue is not there. एक client का पैसा दूसरे client के लिए use नहीं हो सकता. But if the pro and own is short, the entire broker moves to risk reduction mode. Broker keep the terminal बंद, खाली scrub कर सकते हो. And not only broker का, but every client associated with the broker का terminal बंद. So RRM is going to be a huge issue for brokers going ahead. If you don't have sufficient money of your own put in the system. And RRM, there is one more aspect. Even when we allocate, CC will permit using only 90% of the allocated amount. Example, client gave us 200 rupees. We allocated 200 rupees. We are happy. Now CC will allow us to use only 90% of 200, that is 180. Now suppose client takes a position of 190. So 180 will be used from the client and 10 will be taken from the pro. But no penalty. Why? Because 200 is more than 190. But ये pro का 10 रुपया लग गया. And किसी ने pro में पैसा नहीं रखा, तो गए काम से. Now, some broker may turn around and say, why should I give money, my own money? It's a client's money. In that case, in your front end, you'll have to set the limit as 90%. You give only 180 limit to the client. Client won't be able to trade above 150. Pro का पैसा नहीं हटेगा, नहीं लगेगा. This is what all of us would have to think about. Now 50-50 non-cash. Since forever, almost, all brokers have given money to the clearing corporation in 50% securities and 50% cash equivalent. But previously everything was mixed. Now securities have been segregated because of pledge repledge. Now cash is also got allocated. Segregated the different term. Sorry, cash is not allocated. Now the requirement is 50% of the collateral has to be client-wise 50-50. So it is not that one client is given a lot of cash, other client is given less cash. No, that client's position has to be backed by securities and cash in equal measure. But the only exception is if the client doesn't have securities, the cash. If the client doesn't have cash, but the pro has given a lot of cash of his own. By cash, I mean cash and cash equivalent. Even some securities are considered cash equivalent. Then it is okay. So, for example, a client has given securities worth 100 rupees and the pro has given cash of 100 rupees. So, the client will be, that is perfectly all right. CC will not shut you down. The third complication is cannot reduce if used. This is the term I've used. This is not a proper term. So, if a client has been allocated rupees 100 and the client margin realization is 80. Now, let's reduce his utilization from 80 to 70 because cash market में 20% ही लेना था, इसमें T20 में काम कर लिया. The CC system will not allow reduction of his allocation because it already used it. So this may create some interesting issues for some brokers because whenever somebody who's regularly trading in cash market or even derivatives market, settlement का bill debit हो गया, so his limit has gone down, but his balances have gone down, so you can't allocate more. But the system won't allow you to reduce the allocation even though you have a gap. So this is a practical problem we'll face. Let's see what happens. Some other issues that will come is application file response time. Hopefully, allocation file. When we load the allocation file, nowadays we get responses very quickly, but as the loads go up, hopefully CCs will manage to give us more or less real-time response. Second is those brokers who are trading members under professional trading members. The PCM may have a stricter deadline because he or she would have to collect all the data from all the TMs, consolidate and load it to the CC. CC is not going to have a separate deadline for them. So your PCM is going to have a stricter deadline. Has to be. If any one of us would be PCM, we understand. Third is, since it's the end of the issue, each CC has a cutoff time for allocation because everything we allocate is going to the front end. They can't keep the front end on for 24 hours. All right. So some CC would have a 6 p.m., some CC will have 8 p.m. cutoff. So you'll have to upload the file between this time period.
Depending on the processes, CC will try to give us as much time as possible, but brokers have to pull up the sums. Now, there's a standard question, allocation karne ya kaise hai? Okay, so we have tried to do some screenshots, and we have taken the two major CCs, ICCL and NCL, and the screenshots. Other CCs are also there, but the underlying logic would remain the same. Now, about the NCL, first the allocation ka file format kahan milega? So, NCL circular dated 3rd November, and operational procedures are compiled circular dated 17th March. This is what the sample file would look like. There'll be a file name, and then there'll be records, the date, segment, CMID, TMID, which UCC, how much amount. Now, NCL has this key. Suppose you have allotted 100 rupees, and next time you want to allot 200. You make the file write 200, but you have to put U, and then the file get updated. And then from 200, you want to make it 180. Again, date, CMID, TMID, this client 180, but you have to say D. U is upgrade and D is downgrade. I don't know. I don't remember the exact full form, but that's what it is. Now this, and in NCL, this is how you create the file. You can do a file upload, or you can do a screen entry, or you can do API. Finally, everybody will have to move to API. This file always screen entry is not really practical for large operations. Now, file upload NCL, we have tried to provide some screenshot provided by one of our members. So you got to go to NMAS, just log in. Every NCL member knows this login. Within this login, there's a collateral management, right and bottom corner. You go there, and there you'll get the file upload option. When you upload the file, right below you'll get the allocation. This is file upload, very fairly simple. If the file fails, you'll have to re-upload and check the other one. Now, screen-based entry, again, there's an option to put screen-based entries. We have taken the screenshots for modification, but for new entry, you have to use the new request menu. So again, in NMAS, you go to modify inquiry. If you see 2 points up as a new request. New request is for first time entry. Modify inquiry is for whenever you want to modify something. The next screen would be this: select the segment, select the TM code, select the client code, and just modify. Then if you want to see the status of what you have done, again you go here, you view status, and you'll get the status of kya hua, entry record ke saath kya hua, kaise hua, so and so. Now it's always nice for all brokers to keep an eye on the unallocated collateral. So the screenshot for unallocated collateral is in allocation collateral inquiry. This is where you'll get how much is the fungible collateral available for allocation. Now we'll move to the other major CC, which is the ICCL. Their file format is provided in circular number 14 and dated 28th April. This is what a sample file would look like. That's a file name, date, segment, CMID, TMID, P is for proprietary, C is for client, and then UCC amount. Now, again, ICCL doesn't have screen-based. They have file upload or API. File is to upload on extranet. Screenshots here. If you go to the extranet, every ICCL member knows what the extranet is. Go in the uploads. Uploads, when you choose the ICCL collateral allocation file upload, and we upload it. Then you get the response files. Response files are on the base extranet as well as the ICCL collateral module. This is a collateral module. In reports, member reports, you'll get a status of the file, something like this. Similarly, on downloads in extranet, you can go to icon response file. So in uploads directory, you will get something, and in transaction directory, you'll get something. Please have a look at these files. We are not going into too much detail, but just giving you an idea because this is a standard question. Are file kahan milega? Upload kahan karu? Response kahan hai? So we are trying to solve this problem. Now going ahead, this is a request to CCs for the future. Current, of course, you can't make systems overnight. If client is short in one segment and excess in the other segment in allocation, don't penalize it. Just accept it. Okay. Second, if the client is an early paying, you know as a CC he's done early paying. Early paying benefit automatic. क्यों मुझे manually allocate करा? Because anyway pro का पैसा use हो रहा है, the deemed allocation. And तीसरा, if we have replaced securities for you, and you have not given us limit because of our credential and used pro money, no problem, use it. But while calculating short collection and short allocation penalty, just consider the full value now. So that will really reduce the unnecessary problem, because this is going to be a huge issue. A client has pledged shares worth ₹100. Okay, replaced.
and he's given cash 100 crores. But 100 crores can become 80, can become 60, can become anything if prudential limits are hit, which is fine if it hits, if it goes there. The broker will pay from his pro money. We do it even today. But then being penalized for that because we did not manually allocate, it really hurts. So that is that. People will ask this question, what will happen after 6 months? Kya hoga? We are in touch with the authorities, other associations are in touch with the authorities. We'll keep members updated. But please today restrict to EOD because this is going to happen after 10 days. We need to get an act in order. Some little trivia, CCs could respond to this. Do need to upload anything on, allocate anything on non-trading days. For example, if I've allocated on 1 crore rupees to my client on Friday. On Saturday, I gave him a payout, but the allocation is out. So Monday morning, I'll have to need to update it. As long as I update it before trading hours, it should be okay. But please do let us know. Second is, can CCs give us the margin due file end of day before the deadline when we need to upload? So if I'm supposed to upload at say 7 o'clock, if at 6 o'clock give a file कि this is the margin due, इतना allocate हो गया, इतना तुम्हारा provision shortage है. If you do that, we could probably check if we have made some mistake and have the right allocation done. I know it's a difficult task because even you have large systems to run, but something that would really help the market. So we are on to our Q&A session. The Q&A session in BBF, a quick revision is, everybody is on Zoom. You can raise your electronic hand, and the moderator will just turn on your mic, and then you can ask the questions. And after that, we will, me or somebody from the panel can answer the questions. Ek Yes, request, please explain the bucket part again. But okay, I'll immediately do that. Sorry for this. I lost my own. Okay. Now the split of allocation is what we receive from the clients as margin, against which we give limit. It's a list. Okay, if client has pledged securities, जो मैं replace नहीं भी किया, ये भी तो मेरा margin है, जो मैं client से लिया, जो मैं margin count कर सकता हूँ. उसके बाद कई client ने check दिया, check मेरे पास आ गया, मैं उसको margin count कर सकता हूँ. But CC के पास तो पहुँचा नहीं. So what I have received from the clients, I'll call it bucket 1, just for the purpose of discussion. And what I given to CC is bucket 2. So पहले it is not the normal, इसलिए मैं बोला था segregation और allocation different इसीलिए. अब segregation goes एकदम बराबर, ठीक है, clear balance, not clear balance वगैरह वगैरह. But this allocation doesn't go. So मुझे सारे क्लाइंटों से suppose 10 करोड़ रुपए आए हुए in various forms. और मैंने CC को, this is about non-repressed securities, और मैंने CC को 50 करोड़ दिए हुए, जिसमें 40 करोड़ में खुद के ओन है और 10 करोड़ और 50 करोड़ एक बार ओन करके दे दिए. Now I need to allocate 10 crores out of this from there. But client ने चेक दिया, client ने मुझे 100 रुपए का चेक दिया, तो मैं अपने प्रो से 100 रुपया allocate कर सकता हूँ bucket 2 का to that client. See, there is no straight one-to-one correlation. Suppose client ने मुझे ऐसे शेयर दिए जो आगे रिप्लेस नहीं हो सकते, मुझे आ गया 500 रुपए का शेयर, तो मैं शेयर्स मेरे पास आ गए, सीसी को गए नहीं, बट सीसी में जो मेरे ओन के पैसे पड़े हुए उसमें से 500 रुपया मैं क्लाइंट को एलोकेट कर सकता हूँ एज पार्ट ऑफ बकेट. दिस इज व्हाट आई मेंट बाय बकेट 1 and 2, if that helps. Q&A पे चले. उत्तम sir, with your permission. Yes, speak. Yes. Utpal ji, your question please. Vikas ji, okay. Utpal ji, yes. Yes. Yeah. Thank you. Question for NCL actually. So there is no one central location to view client-wise row allocation, available non-cash, available cash collateral, margin utilization in the real time.
So NCL had announced कि CC02 live CC02 type of view will be available in NMAS. Wanted to find out when we can expect that. Sir, you are right, sir. I mean, that feedback had come from members, and we had already informed one-to-one that we are preparing a screen for that. And sir, as soon as it, I mean, we are already working on it. Very soon. I cannot give you a date right now, but very soon it should be there in NMAS. Can we expect it? But can we expect it before 1st August when everything is going live? As Because of without now, that, I agree. As of now, sir, I don't have the date, but yeah. क्या करते हैं करके देखें एक बार। Right, Utpal bhai. okay. And I have one more question, with your permission. बोलिए सर, बोलिए. हाँ जी, हाँ, तो API थ्रू जो deallocation and allocation same instruction set में नहीं हो सकता है. So we have to submit separate file for deallocation वो Can't hear you. through the screen first. Am I audible? Yes, Utpal bhai, you're audible. Yeah. So the deallocation and allocation through the same instruction set, same file, is not happening. So we first have to manually do the deallocation from Pro from the NMAS screen and then upload the allocation file. So can we expect this to be fixed anytime soon? Because without that, this API thing is the whole purpose is I don't know if that's workable. Sir, I need to check it. I mean, a specific case of yours. So I'll check that, sir. We'll check that and we'll come back to you on that, sir. I need to check on. Utpal bhai, feedback noted. Okay. बाद में Yes, sir, speak. Hello. Vikas ji, your question, please. Hello. Vikas ji, your question. Yes, sir. CC02 or and MG13 is showing differ margin in a client. Which margin to be considered for reporting allocation? Is it audible? Yes, sir, Yeah. you're audible. CJ bhai is replying. Yeah, sir. Yeah, that MG13 margin will be considered for short allocation report. I mean, ideally CC02 and MG13 should match. So, but for sure, MG30 margin will be considered for short allocation. Sir, but sorry to interrupt. EOD has to be uploaded before 6 PM. You are telling. No, Vikas bhai, यहाँ मैं आपको सबको interrupt करना चाहता हूँ. Actually, you are supposed to upload beginning of the day. It is, you have to understand, it is not EOD allocation. Allocation तो हिसाब से सुबह ही कर देना चाहिए. But अभी ये है कि EOD तक कर दिया तो मैं penalize नहीं करूँगा. That is what the regulator has said. So ये वाला stand पे लेता है, कोई भी अपने लेते हैं ना कि EOD का तो करना है, दिन का नहीं करना. That is a very dangerous line we take. यदि client ने आपको 500 रुपए का माल दिया है, ठीक है, bucket 1 में, तो आपने 500 allocate कर दिया, कभी भी कर दो. अब दिन भर में 100 काम करे, 200 काम करे या 300 काम करे, उसका तो मार्जिन कवर हो गई. और 500 एक किया तो पेनल्टी लगेगा ही. अब आप बोले दिन भर तो मैं कुछ भी खिलाऊंगा और शाम को मैं उसको 500 तक लाके दे दूंगा, तो सर ये जो भी उसने किया वही करूंगा. तो ये बहुत डेंजरस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है विकास भाई. Okay, we take care. हाँ जी सर. Dipanji, your question, please. Yeah, Utpal, sorry. Hi, thanks for hosting this conference. I had one question that if we are collecting securities from all our clients, and that is more than the margin, then if in the cash line with ICCL, if we allocate all of that to Pro or Own, are we generally compliant? Yes. So I'll repeat this question. Suppose you have 10 clients who give you 1 crore rupee shares each, and you have pledged and repledged to CC. Now you have taken own 10 crores of yours and your own money, you place as FD, and that you have allocated to Pro. Correct? That's the situation? Dipan? Yes, that's the situation. So in that case, if each of your client trades below 90 lakh worth of margin, no problem. There is no penalty on you. Okay. Thank you, Uttam. Keep up the good work. Dipan. Yeah. But there's only one clause: ki whatever you have pledged, repledged,
it is within the prudential limits of CC. Just take care of that. पता चला आपने प्लेज कर रखा है CC के हिसाब से उसकी कोई वैल्यू नहीं, then you'll have some problem. NJ India team, your question, please. NJ India team. Paresh ji Vinci, your Hello. question, please. Paresh ji Vinci, your question. Hello. Paresh ji, yes. Hello. हाँ जी. Yeah. हेलो, ऑडिबल नाउ? हाँ जी. सर ये जो कैश सेगमेंट में एनसीएल के अंदर कैश सेगमेंट में जो प्रो का 85 लाख डिपॉजिट है, उसको मैं क्लाइंट को एलोकेट कर सकता हूँ किसी क्लाइंट को? नहीं, आप बॉस ऐसे मत गिनो, आप बकेट 2 बकेट 1 को जोड़ो मत, ठीक है? आपका बकेट 2 में है क्या वो 85 लाख? सीएम कैश मार्केट कैपिटल मार्केट का डिपॉजिट है वो ये अगेन हाँ। जो सीसी आपको आज के तारीख में लिमिट दे रहा है, हाँ राइट, ठीक है, सीसी आपको 85 लाख का भी दे रहा है, जो कैश दिया उसका एफडी दे रहा है, तो सीसी वो बेकम सीसी इज। अब देखो एलोकेशन में एक नंबर रह गया टोटल, एलोकेटेड या अनएलोकेटेड। सपोज आप कुछ भी एलोकेट नहीं करो तो टोटल कितना आपको सपोज 10 करोड़ रुपए मिले, ठीक है? 10 करोड़ में 85 घुसा या नहीं घुसा उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं। आपके पास 10 करोड़ है बकेट 2 में, अब 10 करोड़ में से अब आप क्लाइंटों को एलोकेट कर दो, बिकॉज देयर इज नो 1-to-1 कोरिलेशन। ओके, मैं जो मेरा है उसमें से मैं क्लाइंट को एलोकेट कर सकता हूँ। मेरा कैश मार्केट में हम लोग प्रो को तो ट्रेडिंग करते नहीं है, ओके, तो जो है वो मैं क्लाइंट को एलोकेट कर सकता हूँ। हेलो, जो भी आपको सीसी ने लिमिट दिया हुआ है हाँ वो आप एलोकेट कर सकते हैं। ओके, Can the CCs confirm if I have made a mistake in making this statement? All DTLS फाइल में जो दिखता है आपका केस कोलेटरल उतना आप एलोकेट कर सकते हो। ओके ओके, Right. थैंक यू। NJ India team, your question, please. Am I audible? Yes, sir. Yes. बोलिए। Good evening उत्तम जी। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पे आइए सर। क्वेश्चन मेरा इतना है आईसीसीएल से कि हमारा सिर्फ कैश सेगमेंट है एंड एज पर कैश सेगमेंट गाइडलाइन सिर्फ 20% हमें एलोकेशन करना है, करेक्ट? अभी एज ऑफ नाउ हमारा 100% कोलेटरल जो आईसीसीएल के साथ प्लेस है वो हमारा प्रोप्राइटरी का कोलेटरल है, विच इज इन फॉर्म ऑफ कैश एज वेल एज सिक्योरिटीज, करेक्ट? तो अभी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो ईओडी में क्लाइंट के एलोकेशन करने वाले हैं कोलेटरल का, उसमें हमारा जो बेस है वो पीक मार्जिन का जो फोर्थ स्नैपशॉट आता है हम उसको बेस बना के क्लाइंट का एलोकेशन करने वाले हैं, ठीक है? नहीं सर, ये ठीक नहीं है। तो सर कौन सी फाइल को बेस बना के एलोकेशन करना पड़ेगा? कोई फाइल को नहीं, आपका बैक ऑफिस को बेस बना के करना पड़ेगा, आपके फ्रंट ऑफिस को बेस बना के करना पड़ेगा। अब मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, सपोज आपकी 100 क्लाइंट है, उन्होंने आपको लाख रुपया दिया, आप बड़े महान ब्रोकर हो और सारा का सारा अपने क्लाइंट अकाउंट में पैसा रखा है, आपने उसको कुछ भी नहीं किया उसके साथ, बहुत जिसको अच्छा ब्रोकर बनाया जाता है, तो आपके टोटल करोड़ रुपए पड़े हुए हैं क्लाइंटों के। अब आपने सीसी में 10 करोड़ का अपना खुद का एफडी दे दिया, और भी बहुत अच्छी बात। अब और 10 करोड़ के एफडी एक बार आपने प्रो में एलोकेट किया हुआ है, वो भी अच्छी बात। अब उसको 10 करोड़ को ब्रेकअप करके 9 को प्रो में रखो और लाख रुपया सारे क्लाइंटों को एलोकेट कर दो। वो काम करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, दिस इज व्हाट द स्पिरिट शुड हैव बीन। अब उसके बाद अभी सीसी बोलते हैं कि ठीक है तूने दिन में कुछ भी किया, शाम को देख लेंगे तो आपका सब बराबर है कि नहीं 6 महीने तक। लेकिन दिस इज व्हाट यू सपोज्ड टू डू, दैट्स द बेसिक प्रिंसिपल। अब इससे आप अलग क्यों करना चाहोगे? उत्तम जी, अगर किसी कस्टमर ने मार्केट क्लोजर के टाइम पे 5 मिनट्स के पहले ही फंड ट्रांसफर किया, अरे क्लाइंट ने फंड ट्रांसफर किया तो आप फ्रंट एंड में लिमिट तो दोगे ना, राइट? तो जब आप लिमिट में दे रहे हो तब आप एलोकेट करो और लिमिट दो। नहीं सर, अभी तो ड्यूरिंग मार्केट इंट्राडे एलोकेशन का तो सिस्टम ही नहीं है ना बॉस। आपको पेनल्टी नहीं लग रही, सिस्टम तो है ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ, तो ऐसे तो आप कह नहीं सकते जब तक डंडा नहीं पड़ेगा मैं सुधरूंगा नहीं। नहीं, दैट इज राइट, बट वो पॉइंट हमारा नहीं है। आपके ये अभी हमको तो अभी आपका एग्जांपल लेता हूँ, उसने 3:28 को बोला 1 लाख रुपए का चेक लो,
ठीक है, और आपने सौदा कर लिया, तो अब 4, 4:15, 4:30 जितने बजे भी है, आप उसको ₹1,00,000 एलोकेट कर दीजिए। आप क्यों वेट करोगे कि भैया 6 बजे सीसी की फाइल आएगी, मैं उसमें देखूंगा, यदि उसमें 80,000 है तो मैं खाली 80,000 एलोकेट करूंगा। आप समझे? Okay. Okay. So basis the trade file only you are saying कि before 6 मेरे पास trade file आ जाता है, उसके basis पे ही allocation चला दो। सर बेसिस, मैं बोल रहा हूँ बेसिस फ्रंट एंड, आपने फ्रंट एंड में लिमिट दिया, उसके बेसिस पे चढ़ाओ, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। Right, right. नहीं, वो आपका point valid है, that we were going to do once this system gets settled down. तो सर डे 1 से सही काम करो ना सर, और डे 1 से सही काम करो, और यदि कोई तकलीफ हो तो एंड ऑफ डे में रीचेक कर दो। दिस इज द स्पिरिट ऑफ द रिलैक्सेशन गिवन बाय रेगुलेटर। यदि अपने उंगली दो तो हाथ पकड़ेंगे तो कोई उंगली नहीं देगा सर। Kalpesh ji, your question, please. Hello. Hi. Hello. Yes. Hello. Hello, Harish here. Yeah. Hello. कल्पेश भाई प्लीज स्पीक। सर जी, एक क्वेश्चन था। अब हम लोग जो मार्जिन शॉर्टेज का रिपोर्ट करते हैं, उसमें हम लोग कुसा के स्टॉक विद मिनिमम 20% हेयरकट हम लोग एक्सचेंज को बताते हैं, तो कुसा के स्टॉक मुझे कहाँ पे बताने हैं? कुसा इज पार्ट ऑफ बकेट 1। बकेट 1, ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ बकेट 1, ओके। और सर सेकंड क्वेश्चन था, जो 50-50 कैश एंड कोलेटरल का रेशियो है, जो मैं कुसा एंड जो प्लेज की स्टॉक है, बिकॉज जो अप्रूव नहीं है एनएससीएल में, वो मैं सिर्फ प्लेज बताऊंगा, उसको रिप्लेस नहीं करूंगा, तो ये दोनों किस तरह काउंट होंगे? मतलब चलते नॉन कैश कंपोनेंट में काउंट ही नहीं है, सीसी को मतलब ही नहीं है उससे। ओके, सीसी को बकेट 1 से मतलब नहीं है, सीसी को खाली बकेट 2 से मतलब है। नहीं सर, जब मतलब ब्रोकर का लिमिट, जब मतलब लिमिट चेक करेगा तो 50-50 देखा जाएगा ना सर, तो क्लाइंट के पास ऑलरेडी ये चल रहे नॉन कैश में है। आप बकेट 1 की बात करोगे, बकेट 2, बकेट 1 को सीसी को बकेट 1 से कोई मतलब ही नहीं। बकेट 1 में क्या है क्या नहीं है, कुसा में है कि नहीं, चेक अनक्लियर्ड है कि नहीं, सीसी को मतलब, सीसी बोले मेरे पास क्या पैसा पड़ा है, मेरे पास कितना एफडी है, कितना बीजी है, राइट, उसको खाली उससे मतलब है। और वो जो बकेट 2 है, एलोकेशन के बाद बकेट 2 का 50-50 चेक करेगा। ओके। और सर सेकंड एक और क्वेश्चन है कि एमसीएक्स एक्सचेंज के जो मैं सर्कुलर देख रहा था, उसमें एंड ऑफ द डे मार्जिन इक्वल टू एंड ऑफ द मार्जिन और डे पीक मार्जिन विच एवर इज हायर, उस तरह लिखा हुआ है। तो अब एंड ऑफ द डे मार्जिन में पीक मार्जिन भी कंसीडर करना है हम लोगों को, बिकॉज एमसीएक्स के सर्कुलर में इस तरह लिखा हुआ है। सर अनफॉर्चुनेटली एमसीएक्स का कोई ऑफिशियल यहाँ है नहीं जिससे हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, बट एक क्वेरी मैंने नोट कर लिया है, विल गेट बैक टू यू। ओके, थैंक यू। Harish ji, your question. Hello. But sorry, I'll interrupt you. ये based on that question, suppose M6 circular में ऐसा लिखा हुआ है P का EOD, ICCL NCL, आप तो अभी खाली EOD पे जा रहे हो ना, आप अभी 6 महीने के लिए पीक में नहीं लगा रहे ना माता, for the time being. Can you just confirm that, please? Yeah, it's only on EOD. Thank you so much, Siju. Yes, Harish it's ji, only your on question. EOD. उत्तम Thank you, सर, Rowana. उत्तम सर, ये सेग्रीगेशन और एलोकेशन कोई इंटरकनेक्टेड हम इतने 5-6 महीने से कर रहे हैं, जो ईओडी T+1 पे कर रहे हैं हम, और एज पर ईडीटी बैलेंस को हम एलोकेट कर देते हैं, बाकी जो है रिटेन विद टीएम रह जाता है, उस तरह से हम ये डेली अपलोड कर रहे हैं, जो 5 बजे तक करना है। तो इससे ये फाइल जो हम लोग अपलोड कर रहे हैं और जो एलोकेशन कर रहे हैं जो टी डे पे, उससे इंटरकनेक्ट करेंगे क्या, चेक करेंगे? कोई क्लाइंट को मैंने सेग्रीगेट किया है अमाउंट और उतना अमाउंट मैंने एलोकेट नहीं किया है वो फाइल में, तो उससे कुछ होगा प्रॉब्लम? सर जब मैंने एकदम सिंपल केस पकड़ो ना, सपोज एक क्लाइंट है जो खाली कैश दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा है और खाली बाय कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली सेग्रीगेशन एलोकेशन एक जैसा हो जाएगा। बट देन बिकॉज ये एलोकेशन कोई नया रूप दे दिया, एक्चुअली जब ये पहले बार सर्कुलर आया था हम सब सोचे कि सेग्रीगेशन का अगला स्टेप एलोकेशन, जो सेग्रीगेट किया एलोकेट करो, बट एक्चुअली कुछ और ही हो गया। ठीक है, एलोकेशन को, एलोकेशन इज बीइंग यूज्ड as effectively as margin collection tool, ठीक है, and segregation is used for security of client assets, ठीक है। तो ये दोनों पर्पस डिफरेंट हो गए। तो शुरू में मैं भी इसी इंप्रेशन में था कि नहीं, तो सर कनेक्ट करोगे क्या सर? जैसा ये 100 रुपीज था, मैंने पूरा मेरे सीसी के पास नहीं दिया, वो रिटेन में रखा हुआ है वो क्लाइंट का, और इधर मैंने सेग्रीगेट कर दिया, इधर एलोकेट कर दिया, तो डिफरेंस आ रहा है कुछ, तो वो उसमें कुछ इश्यू होगा वो क्लाइंट का? सर इस बारे में दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। आगे जाके यदि मुझे इशू करना है एज अ इंस्पेक्टर या ऑडिटर,
तो मैं कुछ भी इशू कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूँ कि सपोज एक क्लाइंट को मैंने दिखाया कि उसका 100 रुपया जमा है और मैंने 100 रुपया बैंक में रिटेन किया हुआ है, जीरो विद सीसी, और सीसी में जाके मैंने उसको 100 रुपया एलोकेट कर दिया, तो ये आउट हो गया पोजीशन। ये क्यों? सो मुझे लगता है एज लॉन्ग एज आप साबित कर सकते हो कि जो आपने एलोकेट किया उतना क्लाइंट का माल आपके पास था, नंबर 1, और जो सेग्रीगेट किया उसके अंदर आपका जी पॉजिटिव था, आपने कोई तरह के नेगेटिव क्लाइंटों का पैसा यूज नहीं किया, मुझे कोई भी इसको जोड़ रहा है तो इट वुड बी अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। सेकंड, the EOD file of allocation that you give to CC will be a 6 o'clock or a 8 o'clock file. Okay. And the segregation file that you give to the CC is the रात के 11:59 का file. So we can always take a stand कि 6 बजे मेरा ये allocation था जो मैंने लोड किया और मैं रात को 11 बजे मेरा allocation चेंज कर दिया. I think that will pass. हाँ, क्योंकि क्या सर जो सिस्टम का फॉर्मूला है ना, वो सेग्रीगेशन के टाइम अलग हो जाएगा, एलोकेशन के टाइम हम मार्जिन के ऊपर एलोकेट करेंगे। बैक ऑफिस अपने जो बैक ऑफिस वेंडर्स है ना, जिनको मैं जादूगर बोलता हूँ, आगे पीछे जाके दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन यदि अलग भी हुआ तो इट इज माय सबमिशन दैट बोथ आर एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो सर उत्तम सर फॉर एग्जांपल एलोकेशन, मुझे ईओडी तक एलोकेशन ठीक करना है, बट मैं हो सकता हूँ, जैसे मेरे ऑफिस में मेरी कोशिश रहेगी मैं सुबह 8 बजे ही दिन भर का एलोकेशन का फाइल लोड कर दूं और अपना बैक ऑफिस को उससे, फ्रंट ऑफिस को उससे कंट्रोल कर दूं, तो शाम को मेरा ईओडी बराबर आना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो हो गया काम। उसके बाद जो सेग्रीगेशन का फाइल है वो रात को बनेगा, अगले दिन बनेगा पिछले रात का, बराबर। तो दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। एकदम टोटली आउट हो गया तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट, लेकिन उत्तम सर एक सीसी भी कोई बोल दे, सीसी इसमें कुछ बोल सकते हैं क्या? उत्तम सर that's a good point. ICCL Rowana, if you could build on. Or you could withdraw a statement and say we'll get back to you later. It's perfectly all right. Yeah, we'll today focus on EOD allocation. हरीश भाई, ये पॉइंट भी नोट कर लिया गया। विशाल और सर मैं आईसीसीएल से पूछना चाहता हूँ, जो पेनल्टी, प्रोविजनल पेनल्टी कब तक देंगे एलोकेशन का? So we will be providing a circular on the details on this in a day or two. You will get the details of how we are providing the penalty in that circular. So please bear with us for a short time. ओके। और उत्तम सर थोड़ा इसको नहीं, अपना जो सेग्रीगेशन और एलोकेशन का कनेक्टिविटी ना, थोड़ा ये प्लीज इसको थोड़ा हरीश भाई नोटेड। क्योंकि क्या है ना, हम अभी देखेंगे नहीं और फिर बाद में ऑफसाइड इंस्पेक्शन में हमको पहले आ जाएगा तो उसमें कोई इश्यू कि भाई मैच नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, जैसे अभी कैश एंड कैश एग्रीमेंट का। हरीश point is noted, हरीश भाई, you got a very good point, appreciate it. Thank you. Avinash ji, your question please. Yeah, hello sir. Sir, actually, my concern is hello. Yes. अविनाश जी बोलिए। हाँ, उत्तम जी, my concern is about कि अगर we are allocating segment wise fund to a client, say for X amount in a segment, से आप पकड़ लो उसको कैश सेगमेंट में, and the client wants to trade means more than that. So is it mandatory to first pre-allocate the funds to that particular segment and then allow clients to trade, or after 6 months it is mandatory, but today you can do it even after a client is traded, before the day is over. Okay, that means we can allow client to trade and then post that we can allocate. शाम तक पोजीशन ठीक कर देना अगले 6 महीने तक। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने 100 रुपए दिया, ठीक है आपको, और आपने 100 रुपए कैश मार्केट में एलोकेट कर दिया, और क्लाइंट दिन भर कैश डेरिवेटिव दोनों खेले जा रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है खेलो, ठीक है। शाम को उसका कैश में मार्जिन ड्यू था 40 और डेरिवेटिव में मार्जिन ड्यू था 40 सपोज, तो आप कैश में एलोकेशन कम करोगे और एफओ में एलोकेशन बढ़ाओगे इन सच ए मैनर कि दोनों जगह एटलीस्ट 40 हो। अब आप कैश में 60 रख सकते हो, डेरिवेटिव्स में 40, डेरिवेटिव्स में 60 रख सकते हो, कैश में 40, जो चाहे शाम तक आपको ठीक करना है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, बट आफ्टर 6 मंथ्स सौदा करने से पहले ठीक करना, अनलेस कोई एक्सेप्शन आ जाए जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। So I have answered your query.
Yes, but the thing is कि don't you think ये practically थोड़ा सा problematic हो जाएगा client बिल्कुल के नहीं, perspective? बिल्कुल नहीं। शाम तक करना है तो 6 महीने बाद की बात कर रहे हो? हाँ जी, 6 हाँ, महीने 6 महीने बाद का, जैसे मैं पहले 4 बार बोल दिया, 6 महीने वाले की बात 2 महीने बाद करते हैं। अच्छा सर, और अभी 10 दिन बाद जो आग लगी उसको बुझाते हैं। समझ गया सर। एंड सेकंड क्वेरी इसकी मींस कोई ऑल्टरनेट वे इसका क्या होगा कि अबाउट दोस सिक्योरिटीज जो क्लाइंट ने प्लेज किया है बट सीसी उसकी लिमिट नहीं दे रहा। आज की तारीख में भी जेब से पैसे भरते हो ना कि दूसरे क्लाइंटों का यूज करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो बस वही कुछ बदलेगा। सी, जो ब्रोकर दूसरे क्लाइंट का पैसा, एक क्लाइंट का पैसा दूसरे के लिए यूज नहीं करता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और जो ब्रोकर, आपकी आप पे एलिगेशन नहीं लगा, जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन जो ब्रोकर एक क्लाइंट का पैसा दूसरे क्लाइंट के लिए यूज करता है, उसको इस सर्कुलर से बहुत तकलीफ होगी, और सर होनी चाहिए, बिकॉज देयर आर मेनी ब्रोकर्स, मेजॉरिटी ऑफ द ब्रोकर्स अपने सीधे सीधे चलते हैं, गलत काम नहीं करते। वो 2-3 नालायक की वजह से अपने सबकी इज्जत का फालूदा होता है बेमतलब। समझ गया उत्तम जी। एंड मेरा क्वेश्चन है अबाउट द सिक्योरिटीज जिसकी लिमिट सीसी हमें नहीं दे रही है। वो प्रो से दो ना, तो आज भी कर रहे हो, और जो इनफैक्ट पिछले 10 साल 20 साल से कर रहे हो। ओके, तो वो जिसका बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहा है, to that certain amount we can allocate to client. It is like almost like shares which are not replaced. Okay. Right? यदि आप उसने आपको प्लेज किया, आपने रिप्लेस नहीं किया, तो लिमिट नहीं मिलती, फिर भी मार्जिन में काउंट होता है। आपने रिप्लेस कर दिया, फिर भी लिमिट नहीं बनी, तो as good as not replace only ना। And उत्तम जी, last means request है कि see, we are members are uploading reports on weekly basis, monthly basis and quarterly basis. तो अभी तो daily basis वाला आ गया, तो can we request to clearing corporation और जो भी डबल ट्रिपल रिपोर्ट से उसको कम कराया जाए, बिल्कुल उस पर जाएंगे। बस सर आज अपने एलोकेशन ईओडी पे स्टिक करते हैं सर, वरना अविनाश जी टॉपिक यदि सच्ची कंप्लायंस पे डिस्कशन शुरू कर दिया तो गए पूरे शाम निकल जाएगी सर। बट पॉइंट वैलिड है, मैं भी ब्रोकर हूँ, उतनी तकलीफ है। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। Amol ji, your question please. Rakesh ji, your question. Rakesh ji. Hello. Yes, Rakesh. Hello. हाँ जी, हाँ। Hello. Hello, Amol ji, your question. हाँ sir. Hello. Yes. Yeah, the thing is that suppose client is given say 100 rupees in a cash segment, and we are allocated that 100 rupees to cash segment. Now the client took a position, say equivalent of 100 rupees, but there is a margin of 20 rupees is getting blocked, right? Yes. आगे बोलिए। Now on T+2, if they want to make we have to make the obligation of that client. In cash segment, suppose we purchase 100 rupees worth shares of rupees 100, and we 100 rupees already allocated to the CM segment on behalf of that client, and we have to make the payment on T+2. So how do we withdraw that? When we can able to withdraw that money? अरे बॉस, विड्रॉल कहाँ से आ गया? ये एलोकेशन की बात है। No. Suppose we allocated that 100 rupees and client took the position on cash segment. आपने उस क्लाइंट ने मंडे को सौदा किया, 100 रुपए का माल लिया, वेडनेसडे को पेन है, आपने मंडे को उसको 100 रुपए एलोकेट कर दिया, राइट, ट्यूसडे को 100 रुपए एलोकेट कर दिया, करोगे ना? पोजीशन खड़ा है, वेडनेसडे को एलोकेशन 0 किया है, ओके, वेडनेसडे शाम को उसका मार्जिन कितना होने वाला है? 0 एलोकेशन 0, एंड ऑफ डे, कोई टेंशन नहीं। बट मेरा पे आउट फंड पेन तो मेरा वेडनेसडे आफ्टरनून में होगा। एलोकेशन का पेन से क्या कनेक्शन है सर? बकेट 2, इट्स मार्जिन्स, इट इज नथिंग टू विद सेटलमेंट्स। ओके, आप तो 2-3 चीजें दिमाग में कंफ्यूज हो गए सर अमल जी। हाँ, that is the reason, because I thought it is again, इसलिए I went bucket 1. What is bucket 1 जो क्लाइंट अपने को दिया? What is bucket 2 जो अपने सीसी को दिए? For margins. पेन तो रोज का चालू ही है, पेन से नहीं कनेक्टेड है ये। So pain, okay, so that obligation we have to keep it separately. हाँ, वो अलग है। तो पेन तो वो bucket 1 में गया ना, लेजर में डेबिट क्रिएट हो रहा है, उसके अंदर गया ना।
Right. हाँ जी सर. Okay. Thank you. हाँ जी सर. SP Toshniwal ji, your question, please. Caesar, Uttam, see, when client has bought on Monday morning and Wednesday morning there is a pay, you have allocated to the client in the trading system. So this is the client money and allocated into the trading system. So paying you are doing from broker's money. So to that extent, for 2 hours, you are using twice the money. This is an anomaly which NCL and ICCL has to solve. You are asking double the amount for 2 hours from the same client. Toshniwal ji, आप सही कह रहे हैं. This is going to be an issue, but after the, 6 months. The solution lies, they should prepone the paying before 9 a.m. and drop the margin as soon as market opens or before the market opens, the way it is done in currency and FNO. That's the solution. Because expecting broker to drop the allocation at 11 o'clock, don't drop between 9 to 11 o'clock is practically impossible. Toshniwal ji, आपकी बात सही है. ये 6 महीने बाद वाला प्रॉब्लम है. एक पैसे को होल्ड करते हैं. 6 महीने की बात का नहीं होता. This is the issue today. How? See, it's an allocation matter, no? No. See, client has given me 1 lakh rupees on Monday morning. I passed on this cash to the CC, right? Now cash is lying with CC on Monday. Cash is lying on CC with Tuesday. Cash is lying with CC on Wednesday morning also. At least one CC I know where you can put a ABC release request for just against pay. And this is an existing problem. This is not because of allocation. No, in NCL you can't नहीं, but Toshniwal ji, आपकी बात मान भी लेता हूँ. So this is an existing problem of last 20 years. No, I am not saying that. See, Uttam, I am not saying this problem is existing. See, today everybody knows it is a pool money from which we are managing between May to today. Whether broker comes on screen or admit whether he is using client money, not using client money, etc. Toshniwal ji, आपके सारे पॉइंट सही है. मैं खाली ये कह रहा हूँ कि it is not an allocation EOD allocation issue. It's a general problem we are facing from last 20 years. कोई क्लाइंट एग्जांपल आपका एग्जांपल देता हूँ. एक क्लाइंट आया, सुनो तोष्णीवाल जी, सुनिए मेरी बात. कोई क्लाइंट आता है, बोलता है 100 करोड़ का ट्रेड टू ट्रेड का माल लेना है. तोष्णीवाल जी मुझे बोलने तो दीजिए. कोई क्लाइंट आता है, बोलता है मुझे 100 करोड़ का ट्रेड टू ट्रेड का माल लेना है. वो मुझे 100 करोड़ का चेक दे देता है. मैं 100 करोड़ का एबीसी करता हूँ, उसको माल लेने देता हूँ मंडे को. अब वेडनेसडे को पे इन कैसे करूँ? करेक्ट. आपके एग्जाम्पल को मैं थोड़ा आगे ले रहा हूँ. पे इन कैसे करूँ? दूसरा 100 करोड़ कहाँ से लाऊं? पहले एबीसी विड्रॉ करके पे इन करना. करेक्ट. यही है ना इशू. तोष्णीवाल जी आप म्यूट पे चले गए. हाँ, ये इशू है. हाँ, बट ये एग्जिस्टिंग इशू है. ये एलोकेशन से रिलेटेड नहीं है. इसका सॉल्यूशन आपका बहुत प्यारा है. आप जो बोल रहे हो कि मंडे को वाली, हाँ बोलिए. ये एग्जिस्टिंग इशू नहीं होता. अब तक ऐसा था कि वो कस्टमर को मंडे और ट्यूसडे को मैंने अलोकेशन नहीं किया, वो पैसा विड्रॉ कर सकता था मैं एनसीएल से. अब मैं एनसीएल से पैसा विड्रॉ करना चाहूंगा तो वो बोलेगा क्लाइंट का मार्जिन ऑब्लिगेशन आप विड्रॉ नहीं कर सकते. वेडनेसडे 9:30 बजे मैं बोलूंगा कि ये क्लाइंट का पैसा मुझे विड्रॉ करना है, बोलेगा नहीं कर सकते. तो आपका मार्जिन ऑब्लिगेशन है, आपका मार्जिन ड्रॉप होगा 11:30 बजे. तो 9 से 11:30 के बीच में आप आपका पैसा लेके आओ फ्रेश. अब आपका पॉइंट समझ गया. आप ये कह रहे हो कि वो अनएलोकेट करने नहीं देगा बिकॉज़ मार्जिन यूज्ड है. 11:30 यदि अनएलोकेटेड नहीं हुआ तो अनएलोकेटेड कैपिटल में नहीं होगा तो अपने एबीसी रिलीज नहीं कर सकते. हां, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. अच्छा, मैं समझ गया. थोड़ा टाइम लगा लेकिन समझ. So solution is what I am continuously proposing, that make the cash market paid at 8:30 in the morning or 9 o'clock in the morning, securities and cash both. That is the only solution. Or permutation combination tried, broker has to reconcile instead of going into RRM, going into hardship. The best is make cash paying and securities paying 8:30 in the morning T+2. If we can't manage T+2, how we will manage T+1? Noted, Toshni. Caesar, you have your views on this. Sir, I mean, you already told that you have given this feedback earlier. So, yes, sir. Whenever, I mean, sir, 2 अगस्त में टाइम बचा नहीं है. आप दो आप शायद 10 दिन के अंदर पेन प्रीपोन कर दें. शायद मुश्किल है. See, Uttam, the point here is all broker goes and tell to the NCL no problem. NCL को क्या दिक्कत है? तोष्णीवाल जी आपने सजेशन दे दिया, नोट हो गया. तोष्णीवाल जी एक बार आगे बढ़ते हैं. डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है जी. Virendra ji, your question, please. Yes. Virendra ji. Yeah. Uttam, see, you have taken all simple case examples जहाँ सीधा है, पैसा आया, कैश मार्केट में ट्रेड करने दिया और सब कुछ हो गया.
Real life is slightly more twisted. In the sense, सबसे पहले तो मेरा ये problem है कि आप कह रहे हो you don't wait for the exchange file to determine how much margin is required in that particular segment. अभी मेरी ट्रेडिंग 5 बजे खत्म नहीं हुई, 7 बजे तक तो करेंसी खुली है और 11:30 तक MCX खुला है. So how much limit I should allow in CD and MCX to the client is dependent upon the number which I get from the CC for cash and F&O margin. Correct. So you cannot actually wish away or answer away this question कि भाई तुम्हारे को क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे को exchange ने कितना margin लगाया, कितना रखना है. So the timeline for that margin has to be reasonable and therefore reporting time has to have a buffer after that. If you are going live on 1st August, by what time will CCs give us the final closing margin number for 3:30 F&O 4 o'clock cash market? Fair point. नहीं तो आप 6 तक रिपोर्ट मांग रहे हो तो मेरे को रिपोर्ट दोगे कब तक? मेरे को भी तो कुछ बैक ऑफिस में प्रोसेसिंग का टाइम दोगे. I don't know if any of the CCs can address what are the timelines which they plan to do on 1st of August. Any feedback from the CCs, please? Sir, the current timelines which is there, I mean till 6 p.m. As of now, there is no change on that. Fair enough, but when will you publish the margin number for that 3:30 in F&O? This is the margin, and in cash market, this is the margin on this UCC. And there is a specific problem on expiry days, because expiry day the closing margin is very different, because post expiry the numbers are very different from what they are at 3:29. Sir, there is, I mean, there is the files will come the way it's coming today. I mean, it's already optimized. So with regards to EOD allocation, I mean, there is no proposed change in the timing of the MV13 files. Okay, so sorry, Uttam, please continue. Please continue. Sorry. So the point is, we have to report at 6 p.m. though the numbers of what is the EOD margin will be given to us at 7 p.m. Yeah, that's how the things stand today. By 6 o'clock we have to allocate, and basically it has to be a guess. Ki my allocation 6 is more than what is going to get demanded at 7. Right? ऐसा हो गया ना situation. यही हो गया ना. So this is the system we have to live with for the time being. So I'm sure CCs are noted. Even if we have to live for a few months, we should have a goal that if not by 1st August, by 1st September, we will have a timeline to give it to a number before 6 p.m. Right? I mean, my only request is that, even if we can't solve it today, let's have a roadmap that will solve it in 45 days, we'll solve it in 60 days. CC is requested to please make note of this point. I think it's a very valid point. अच्छा, the next question is, आपका जो circular है, उसमें 5 reason codes में exemption है, even subsequently, which includes say margin with another CC or EPI या NRI client, so on and so forth. So even in EOD allocation, those exemption reasons will not get penalized, I hope. Sir, those exception or those cases were for intraday allocations, not for EOD allocations, sir. Okay, so those will apply only to intraday allocations, not to end of day. So end of day, if I have margin with another CC, I actually cannot allow the client. So for example, if I have surplus margin at NCL, but I want to allow the client to trade at MCX, I actually cannot allow the client to trade. You're asking for intraday, sir? So no, intraday trade can technically result into a end of day. You can do that, but you have to allocate money out of your own capital. You have to allocate from your own and deallocate from there. That seems to be the requirement. Okay, so I allocate from my own capital. That should be able to resolve. The
next question is related to the movement of collateral when a client pledges across all segments. Till what time will I be able to move that stock? Because as Uttam said, दिन भर cash future में उसको काम करवाते रहे, शाम को when once I know कि 40,000 cash में 50,000 F&O में है, तो I would want to move that stock. So will I be able to do that even after 6 p.m? Because if your files come at 7:30, at least the stock I should be able to move. What is the current cutoff for inter-segment transfer of securities? If the CCs could guide. Sir, it is 4 o'clock, sir. So Siju, if that is 4 o'clock, I don't have numbers of closing margin. I have let the client work within whatever collateral he has given in terms of securities, and he has pledged those securities across segments to NCL. Why I should get penalized? You are not providing me a tool to be able to move those securities. CJ, actually, if you could consider, if see across two CCs, again, it's a bit complicated. But if a person is a self-clearing member with the same CC for all the segments, and if there's some extra allocation lying in one segment, right, and there's even if it is end of day, and there's a short in the other segment, please don't penalize the such questions. You could actually take and see, the whole objective is we don't want clients to trade without margins, which is fair. I mean, we have all accepted it as a market as market stakeholders. But यदि client का sufficient margin है, just because एक segment में दूसरे segment में नहीं है, as long as it is lying with CC, even the CC has visibility. So why are we penalizing such positions? CJ, I think both CCs, you should really reconsider your stand on this point, sir. I think it's a very, very, very valid point. And you have to take it up internally and with the regulator and get clarity. Even we will do it as an association, but requesting you to also give it a sympathetic thought. Noted, sir. Noted. And Uttam, I think one of the participants raised this question. The MCX circular, the way it is currently worded, is not reflecting that it has to be, it includes peak margin, the way it looks from reading, the association needs to take up even with MCX that they should interpret in line with what ICCL and NCL is, reading it. So somebody had raised this question and he said, कि अभी पता नहीं MCX का क्या है. He was right. The way the circular is worded, it is very ambiguous and confusing. We'll do that. We must. An interesting question, if you take up with them, is by what time would they expect the report, because their market is running till 11:55. उनका end of day क्या है भाई? Yes. They'll probably take this time which I took. So पहले allocate करो. तो क्या करो? Which is a theoretical stand I took. Practically, life works in a different way. Yes. As you said, at 7 p.m, if I come to know his F&O margin of the client is only X, I can still allocate from my prop, but I cannot allocate from my prop till I know कि हाँ expiry के बाद उसका F&O का margin कम हो गया है, तो उसको उधर काम करने दूँ. Yeah. Point. That issue is there in CD segment. I mean, even if I leave out MCX, CD is there till 7 p.m. And therefore, this, actually, we are implementing a patchwork without accounting for the implementation timelines. But I understand there is a regulatory pressure to do the same. Fine. I just wanted to highlight these points. Yeah, thanks. Thank you so much, sir. Paresh ji, Natekar, your question. Yeah, hi. I have a simple question. अगर client का कोई भी balance नहीं है, let's say an example, cash में 0 है और security 100 rupees है, और उसने मार्जिन 100 रुपीज का ही यूज किया है. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, वो प्रॉप में से ब्लॉक होगा, राइट? नहीं, यदि प्रॉप के पास भी पैसा पड़ा हुआ है क्या साइड में? प्रॉप का पैसा पड़ा हुआ है, प्रॉप का कैश पड़ा हुआ है, तो वो क्लाइंट में से ब्लॉक होगा. सो कितना होगा? अगर 90 रुपीज होगा क्या? हाँ. पर 90 रुपीज का ये जो कैलकुलेशन है आपने कैसे किया? मतलब आपने 90% आ रहा है, आप मिस कर गए वो स्लाइड. ओके. सो प्रॉप में से 90 रुपीज का ही मेरा नो क्लाइंट का 90, प्रॉप का 10 नहीं. सो मैं रिपीट करता हूं आपका एग्जांपल. क्लाइंट ने 100 रुपए शेयर दिया और कुछ नहीं दिया. यस. और प्रॉप ने 1000 रुपए कैश दे रखे. प्रॉप बहुत रिच है. तो और क्लाइंट ने 100 रुपए का सौदा किया.
₹90 सपोज क्लाइंट ने 50 का सौदा किया तो 50 क्लाइंट के शेयर से यूज होगा। नहीं 100 का लो सुनो सपोज क्लाइंट ने 70 किया तो क्लाइंट का 70 यूज होगा। सपोज क्लाइंट ने 90 किया तो क्लाइंट का 90 यूज होगा। सपोज क्लाइंट ने 92 किया तो 90 होगा क्लाइंट का, 2 होगा प्रॉप का। बिकॉज वो 90% RRM हिट होगा। नहीं तो 50 आपने 50-50 RRM मिक्स कर दिया डिस्कशन में, इसलिए। नहीं मैं समझा नहीं, मैं कह रहा हूँ तो इसमें प्रॉप का ब्लॉक कितना होगा इसमें? तो आपने अगर प्रॉप अगर मैं जीरो उस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। नहीं सर, प्रॉप का भी नहीं क्लियर। प्रॉप का मार्जिन कितना यूज किया? 100 रुपीज किया है या कितना किया? मैंने बोला ना 10। प्रॉप का मार्जिन इसमें 10 रुपए ही होगा। 90 क्लाइंट का जाएगा, 10 प्रॉप का जाएगा ना। ओके क्यों? क्योंकि आप कंसोलिडेटेड लेवल पे देख रहे हो कि मोर देन 50% 100 रुपीज तो क्लाइंट ने दे ही रखा है और ब्रोकर ने दे ही रखा है, राइट? करेक्ट। ओके एक्सीलेंट। अच्छा सेकंड, इसके अंदर अगर मान लो क्लाइंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब 100 रुपीज डेबिट है और सिक्योरिटी है उसकी 1000 रुपीज की, तो मेरे को जो फाइल अपलोड करनी है उसमें जो डेबिट वाले हैं उसको 0 अपलोड करना है क्या? हाँ जी। ओके और उसको 0 जब अपलोड करना है और उसमें जब हमने मार्जिन यूटिलाइजेशन देखेंगे तो उसमें भी वैसे ही करेंगे जैसे आपने पहले एग्जांपल में दिया कि अप टू सिक्योरिटी जितनी है उतना, उसके बाद। परेश भाई आपने एक बहुत प्यारा पॉइंट पकड़ लिया जो हम भी सोच रहे थे। तो सपोज एक क्लाइंट ने 1000 रुपए का शेयर्स प्लेज और रिप्लेज किया हुआ है जी और उसका लेजर 500 डेबिट है जी तो अपने तो उसको 100 रुपए 500 लिमिट देते हैं बैक ऑफिस में। बट जी सीसी उसका बिकॉज रिप्लेज है इसलिए तो ऑटो एलोकेशन में जाएगा। ऑटो एलोकेशन में सीसी उसको 1000 रुपए लिमिट दे देगा। जी ठीक है, ये सिस्टम की एक एनोमली है। बट सीसी ने 1000 दे भी दिया लेकिन आप 500 के ऊपर सौदा अलाउ मत करो तो काम सुलझ जाए। ठीक है, तो 500 के ऊपर मैं सौदा अलाउ नहीं करूंगा और 500 का जो सौदा जाएगा वो पूरा पूरा सिक्योरिटी में से एडजस्ट हो जाएगा प्रोवाइडेड आपके प्रॉप में सफिशिएंट कैश पड़ा हुआ है। हाँ वो तो हमेशा फंडामेंटल असम्पशन है। सपोज कैश में हमने 10,000 दे रहे तो सब सिक्योरिटीज एडजस्ट होते रहेंगे। तो ये पॉइंट प्रेजेंटेशन में कहा भी था एक बार। है कोई बात अच्छा, वो रिक्लैरिफाई हो गया। हाँ ओके ठीक है। एंड द लास्ट वन इज की जो सो आरएमएम का जो मॉड्यूल है वो आपका क्लाइंट लेवल के ऊपर जो एक्सेस है जो है वो कैलकुलेट करेगा और प्रॉप में कितना मार्जिन है उसी को ही देखेगा, वो टोटल पे नहीं देखने वाला जो आप। करेक्ट। Okay. One more thing I want to ask on this. I mean, let's say the client is traded in the ASM script. Okay. Now at the time of allocation, वो किसी में भी करे अपने को 20% चाहिए कैश मार्केट। अच्छा 20%। ठीक है, okay, clarified. Thanks. Mr. Atul Choksi, your question, please. Yeah, there is one. ये ऐसा है कि अगर कोई क्लाइंट ने 5 लाख रुपया कैश दिया है और 20 लाख रुपए का शेयर दिया है टोटल, और हमने 5 लाख रुपया कैश में से एलोकेट किया, 20 लाख रुपया रिप्लेस किया हुआ है शेयर। अगर क्लाइंट 15 लाख रुपया मार्जिन यूज करता है तो सीसी अभी हमारा आईसीसीएल में क्लियरिंग है, सीसी क्या करता है कि उसका 5 लाख रुपया कैश का ब्लॉक करता है 7.5 जो 50-50 के रेशियो के हिसाब से। अगर क्लाइंट का एमक्यूएम आता है डेबिट या उसको पैसा चाहिए क्योंकि उसका मार्जिन यूटिलाइजेशन उसका कोलैटरल से कम है, हम उसको पैसा देना चाहते हैं तो वो हमको अनएलोकेट नहीं करने देते हैं। ये बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। सीसी if this not permitting unallocation because already used, you'll have to look at that logic again. Because if the client has sufficient security, then you won't let cash be another. If you're looking at अतुल भाई का एग्जांपल जो लो, the client ने 20 का शेयर दिया, 5 कैश दिया और 5 allocated, बहुत अच्छी बात। और उसके बाद उसने उसका 15 का मार्जिन भी हो गया। So there's sufficient securities. Why are you not allowing me to unallocate the cash? You'll have to this downward. दूसरा, there's one more situation, you know, where I have allocated 100. Now client purchased T2T shares of 100. I was supposed to allocate only 20. 80 तो additional है. Please let me downward allocate that. In fact, let me downward allocate anything. And if I downward allocate below the requirement, please penalize me if I'm so stupid. But why are you putting that break, system break in? Reduce करने नहीं दूंगा जाओ. That is something. Please, both CCs have to look at the logic how we are doing it. And ये तो एकदम genuine case है. There's sufficient securities. Why are you not allowed? Why are you not releasing the cash? The overall 50-50 is maintained.
Specifically, this is for example of ICCL. Rohana, you probably could take a note, or if you could like to respond to that. Yes, Uttam, we've taken note of this. We will give some update on this in some time. उत्तम जी एक issues पे यदि CJ, even probably if you could also look at the reduced of used position logic of NCL and just look at from market practices point of view. Just have a review ना, वहाँ पे पंगा होने का बहुत चांस है आगे जाके. और एक इश्यू ये भी है कि अगर मैं उसका 5 का 5 रखता हूँ, उसको 1 लाख रुपया M2M आया और दूसरे दिन मैं अगर उसका 5 का 5 रिड्यूस नहीं कर पाता हूँ, तो I will end up allocating more than his collateral. Yes, right. And that's a violation, non-compliance. Thank you. Right. उत्तम जी, your question please. Yes. उत्तम जी, जो वीरेंद्र जी के साथ बात चल रहा था ना, उसी को कनेक्ट करते हैं कि एक्स अमाउंट आई हैव एलोकेटेड इन F&O सेगमेंट, अभी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट करेंसी के लिए या कमोडिटी के लिए कहीं पे भी आ रहा है, तो आप बोल रहे थे कि प्रोप से एलोकेट कर दो, लेकिन क्लाइंट से जितना मुझे आया था उतना तो मैंने एलोकेट कर दिया है. अभी F&O से मैं डी एलोकेट नहीं कर पाऊंगा तो मैं आगे जाके MCX में या करेंसी में एलोकेट नहीं कर पाऊंगा, और F&O का डेडलाइन खत्म हो गया है, तो उस केस में क्या होएगा? वीरेंद्र ने ऑलरेडी बहुत सही पॉइंट कर दिया. द ओनली वे ऑफ गेटिंग सम जजमेंट is the only way of getting some judgment of how this will be handled is the only practical solution is looking at your front end, because सारे सौदे क्लाइंट का क्या सौदा आपके फ्रंट एंड को पता है, क्लाइंट का क्या मार्जिन आपके फ्रंट एंड को पता है, और आपको 3:30 बजे पता है डेरिवेटिव्स का कैश मार्केट का, और 4 बजे कैश का, जो भी आप कर लीजिए, उसी से कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा. हाँ, बट जब तक सीसी कुछ और रास्ता नहीं बताते, if CC can give us the file at 4:15 मजा आ जाएगा, ठीक है, और रियल टाइम फॉर दैट मैटर, बट वो नहीं दे सकते बिकॉज एंड ऑफ द डे स्पैन फाइल भी चेंज होता है, रेट ऑफ मार्जिन चेंज होता है, स्टॉक के प्राइस चेंज होता है, सब कुछ बदल जाता है. सो बट दिस इज अ प्रॉब्लम. We will have to find a solution out of it using our front end. और इनफैक्ट बाजार में आई बिलीव ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, आई डोंट यूज इट, जो रियल टाइम ट्रेड्स लेकिन रियल टाइम क्लाइंटों का मार्जिन सेगमेंट वाइज यूसीसी वाइज बताता है. या तो खर्चे करने पड़ेंगे अपने को सॉफ्टवेयर लेके. लेकिन मैंने देखो किसी भी तरह 3:30 बजे भी मैंने अज्यूम कर लिया कि इतना ही रिक्वायरमेंट है F&O के लिए, वहां पे उतना सेट करवा के रख दिया. लेकिन अभी कुछ भी एंड ऑफ डे एलोकेशन होने के बाद, F&O सेगमेंट का एंड ऑफ डे एलोकेशन होने के बाद अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटी क्लाइंट को मिलता है कि MCX में वो यूटिलाइज कर पाए, लेकिन वहां पे मैं एलोकेट ही नहीं कर पाऊंगा उसको, तो उसका या तो पुनीत भाई, जैसे अब सपोज क्लाइंट डेरिवेटिव्स कैश और सब सेगमेंट करा जो अलग अलग टाइम बंद होता है, अभी आपने कैसे भी एलोकेट करा, ठीक है, जैसे डेरिवेटिव्स का साइज, मैं एकदम अजीब बात कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ वेरी वियर्ड सोल्यूशन. जैसे 3:30 बजे डेरिवेटिव्स बंद हुआ, आपको मालूम है डेरिवेटिव्स का मार्जिन कितना है क्लाइंट का? हाँ, अब उसको उतना एलोकेट कर दो, बाकी रोक दो. एक्सचेंज आपको डीएलोकेट करने देगा, बिकॉज़ आपको उसका मार्जिन थोड़ा 1 रुपया ऊपर रखोगे तो करेक्ट. हाँ, उसके बाद 4 बजे कैश बंद हो गया, पोस्ट क्लोजिंग 4 कैश है, कितना मार्जिन आपको जजमेंट आ गया 20% के हिसाब से, ठीक, उसको उतना एलोकेट कर दो. अब वहां प्रॉब्लम होगी बिकॉज़ कैश में 80% मोर देन 20 वाला भी हो सकता है, बट लेट्स होप वाला इशू नहीं है फॉर द टाइम. तो 4 बजे कैश को उतना कम कर दिया, ठीक है. अब बाकी आपका अनएलोकेटेड पड़ा है सारे बाकी सेगमेंट में खेलने. अब आपका करेंसी 7 बजे बंद हुआ, तो 7 बजे कर, अब इट इज अ हॉरिबल सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज नॉट अ ग्रेट सॉल्यूशन, बट पॉइंट इज दिस इज वन सॉल्यूशन दैट कम्स टू माइंड. सी, काम हमें करना है, रास्ता में ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज अथॉरिटीज तो बोल देंगे कि बहुत तुम नहीं कर सकते, मत करो. वो ना तो हम सुनते नहीं, हम रास्ता ढूंढना हर इंडियन बिजनेसमैन का कर्तव्य है. ना बोल नहीं सकते ना क्लाइंट को उत्तम जी, तो रास्ते हमें ढूंढने पड़ेंगे सर. ये जैसे मैंने एक सोल्यूशन सुनते सुनते बोला, वैसे थोड़ा माथा खुजाना पड़ेगा, 4-5 जन मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा. विल हैव टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस. बट पॉइंट हैज बीन मेड बाय वीरेंद्र जी एंड अगेन reiterated by you. A very good point, no doubt about it. Yeah, okay. Rahul ji, your question please. Yeah, hi. See, basically, I'm a clearing member from ICCL.
and I do a little bit of institution business also. So this allocation thing will be applicable to ICCL also, to institutional investors also. देखो 6 महीने तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, 6 महीने के बाद में भी, क्योंकि आज से जो तैयारी सर, करेंगे वो 6 महीने के बाद की तैयारी राहुल भाई, करेंगे। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ 6 महीने बाद का टॉपिक एक बार रुकने को, वरना बिकॉज ये वाले अब तक ऑलरेडी सो मेनी इश्यूज ऑन द टेबल है, आगे जाएंगे ना तो ये गत्ते से जाएगा और कोई बात नहीं। आज के दिन में भी एलोकेशन अपने को, you have raised the issue, I've made note of it. And right. Institution trades ka, how will we handle the margin? Right. Do we need to allocate or will it be all right? Because institutional trades are by custodian settled, so अपने लोग का कोई margin वगैरह कुछ भी block नहीं है। I agree. Right. But उन लोग को अभी भी allocation incidentally, यदि institution आपको margin block हुआ ही नहीं तो कुछ allocate करने की जरूरत ही नहीं, short margin लगेगा ही नहीं। नहीं, बट आज के दिन में सिनेरियो अलग है, बट ये 1st of August से First August will be different. No, see there are two institutions, two custodian settled, one institution trade, एक non-institution, एक normal non-institution but custodian settled trade, okay? Institution मतलब ICG ऐसे वगैरह। Right. उसमें आपको margin लगता ही नहीं है। जब लगता ही नहीं है तो short allocation हो ही नहीं सकता। Okay. तो 6 महीने बाद भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। Okay, understood. So over there is no problem. But जो custodian settled है बाकी वो सब 6 महीने बाद का प्रॉब्लम। अभी I'll request you to just hold the question. Sure. Now Uttam ji, my second question is, suppose if a client is wanting to buy 1,000 shares of Reliance, 25 लाख रुपए का माल हुआ, so जो allocation करूंगा मैं उसका 20% मार्जिन के हिसाब से 6,25,000 रुपया करूंगा कि full 25 lakhs करूंगा? आपकी इच्छा मेरी, मतलब जो 20% से ज्यादा 6.25 लाख और मोर। ओके, 625 प्लस मार्क टू मार्केट जो भी चीज लगे वो एडजस्टमेंट करेंगे। एलोकेशन में शायद नहीं आता। ओके, सिर्फ 6,25,000 इज द मिनिमम अमाउंट। And you cannot allocate more than what the client has given you. Let's assume client has given you check of 10 lakhs. Right. हाँ। तो अब 6.25 से लेके 10 लाख के बीच कुछ भी allocate करो तब तक पेनल्टी नहीं लगेगी। ओके, अंडरस्टूड। तो अगर उसका सपोज मेरे पास में 10 लाख रुपया बैलेंस है अकाउंट के अंदर में, फुल 10 लाख भी कर दूं, इफ ही इज यूटिलाइजिंग 625 इट इज ओके। फिर नेक्स्ट डे वापस से मुझे रीअलोकेट करना पड़ेगा इफ ही वांट्स टू ट्रेड फॉर दैट 3,75,000 रुपीस। उसको तो ऑलरेडी एलोकेट तो कर दिया। 10 लाख रुपए में से मेरा 625 तो यूटिलाइज हो गया। हाँ, तो और पड़ा है ना। हाँ, तो 375 का मुझे वापस से सीसी को बोलना पड़ेगा। नहीं, सीसी का आपने 10 बोला हुआ है। हाँ, और 10 हमेशा चलता रहेगा जब तक आप चेंज नहीं करते। ओके, जब तक मैं फिगर चेंज 10 में से उसने 6.25 यूज कर लिया, वेरी गुड। कल 7.25 हो गया, फिर 6.25 हो गया, चलता रहेगा उधर में। 10 जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक। 10 जब तक क्रॉस नहीं करता प्रॉब्लम। दो चीजें, एक वहां 10 क्रॉस नहीं करना चाहिए, वहां आपके लेजर में 10 के नीचे नहीं जाना चाहिए। हाँ, 10 के नीचे नहीं जाना चाहिए, समझ गया। ओके, देन शेयर प्लेज। एक और एक क्वेश्चन है, शेयर प्लेज नो कैश। अभी कोई क्लाइंट है सिर्फ शेयर्स देके रखा हुआ है एंड वो भी सिर्फ हमारे बुक्स के अंदर में, मतलब वी हैव नॉट प्लेस्ड दोस शेयर्स टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। सब एलोकेट कर दो आप। मैं उसको उतने फंड का जो भी हेयर कट वगैरह के बाद में निकलता है उतना एलोकेट कर दूं प्रॉप में से। आफ्टर 6 मंथ्स देन द टेंशन वर्क स्टार्ट्स। नो, आफ्टर 6 मंथ्स में यही करो ना। पहले अभी शाम की जगह सुबह 8 बजे करना पड़ेगा। सुबह में 8 बजे। ओके, समझ गया। से पहले कर दो। ओके, राइट। एंड इसके अंदर में ये आईसीसीएल रियल टाइम बेसिस के ऊपर में फाइल अपने को एलोकेशन वाला सक्सेस फाइल भेज देगी कि टाइम लगेंगे? बिकॉज बहुत बार आईसीसीएल से फीडबैक एक दो फाइल लोड करके तो देखो। ओके, समझ गया। मतलब क्लाइंट को अपॉर्चुनिटी लॉस करवाने के लिए दो। क्यों? तो क्लाइंट अगर अपने 9 बजे भी करेंगे अपलोड, सपोज 9:30 बजे तक उनका रिस्पांस नहीं आया, तभी अभी फाइल लोड तो करो, आ रहा है रिस्पांस, ऐसी बात नहीं है सर। ओके, हाँ ठीक है। एक और एक क्वेश्चन था, अगर सपोज क्लाइंट ने मुझे 10 करोड़ रुपया दिया है, राइट, एंड वो ट्रेड करते करते 15 करोड़ रुपए का कर दिया, राइट, तो मैं एंड ऑफ द डे के अंदर में तो एलोकेशन एलोकेट कर सकता हूँ क्लाइंट को, वेरिन देयर विल नॉट बी अ पेनल्टी। बट ये जो फाइल देंगे रिक्वेस्ट प्रोवाइडेड कि 5 करोड़ से आया है और फर्दर, हाँ फर्दर आ गया एंड ऑफ द डे तक, राइट, जो मैं उसको रीअलोकेट करके एक्सचेंज को देने के लिए तैयार हूँ, राइट, द फाइल इज रेडी आफ्टर 3:30, राइट, क्योंकि आरटीजीएस वगैरह अपने को 3:30 बजे तक आ जाते हैं। सिर्फ आईसीसीएल को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फाइल्स वगैरह ये जो लेस एलोकेशन वाला जो फाइल्स अगर वो लोग भेजते हैं, राहुल जी मैं ये कह रहा हूं, आप 10 करोड़ ऑलरेडी उसका एलोकेट कर चुके हो, उस बंदे ने 5 का चेक दिया, आप 15 करोड़ एलोकेट कर दो ना। 15 नहीं, मुझे अगर जब तक मेरे पास में चेक आता नहीं है या फिर जब तक मेरे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तब तक मैं उसको एलोकेशन कैसे कर, बिकॉज़ दैट वुड बी अ रॉन्ग। आपने सौदा तो करने दिया ना,
हाँ सौदा करने दे दिया, बिकॉज सौदा कर, सी पॉइंट इज वो आपकी परमिशन में सौदा कैसे कर सकता है? वो चीज सही बात है। या अब आपने फ्रंट एंड में लिमिट दे दिया कि हाँ। भैया इसका 5 का चेक आ गया, इसको लिमिट दे दो। जहां फ्रंट एंड में लिमिट दिया वहां एलोकेशन कर दो, काहे एंड ऑफ डे का वेट कर रहे हो? ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। किसी जिसका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है वो तो कर सकते हैं। जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, 10-4 सेगमेंट में खेल रहे हैं, मिनिमम कैपिटल को फुल यूज कर रहे हैं, वहां बहुत ध्यान रखना पड़ता है। समझ, सीधा काम तो हो जाए। समझ गया। अभी एंड ऑफ द डे के अंदर में अपना कोई भी क्लाइंट सेल करता है एंड डिलीवरी दे देता है, अपने एंड ऑफ द डे के अंदर में ऊपर एक्सचेंज लेवल तक जो डिलीवरी मार्किंग कर देते हैं, राइट? अभी उसी मार्जिन जीरो हो जाता है, तो एंड ऑफ जीरो हो जाता है, नहीं। वो शाम को होएगा। बट अगर वही सपोज 10 लाख रुपए का माल बेचा है एंड उसको 8 लाख रुपए का माल खरीदने का है, सर मैंने इसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया था, यदि आप ये वीडियो वापस YouTube में देखोगे आपको पता चल जाएगा। ओके, वन ऑफ द एग्जांपल्स कवर्स दिस एग्जैक्ट सिनेरियो सर। ओके, समझ गया, ठीक है। मैं आपका YouTube वीडियो रिविजिट कर लूंगा। ओके, थैंक्स। निर्मल जी, योर क्वेश्चन प्लीज। हेलो निर्मल जी, योर क्वेश्चन। हेलो, हाँ जी निर्मल जी। एक ही क्वेश्चन है सर कि मेरे सब क्लाइंट का मिला के समझो मैंने 10 करोड़ रुपया एक्सचेंज को दिया हुआ, सीसी को दिया हुआ है, देन आई हैव टू अलोकेट द एंटायर 10 करोड़ टू माय क्लाइंट्स, या उसमें से थोड़ा कुछ जिसका शॉर्टेज आता है उसका ही मुझे एलोकेशन करना है एंड बैलेंस आई कैन कीप इन टॉप? सर अगेन निर्मल जी, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, बट आई एम गोइंग टू आस्क द सीसी। सो आई विल जस्ट रिफ्रेज। बकेट 1 में आपके पास 10 करोड़ है जो क्लाइंटों से आया है, डिफरेंट फॉर्म्स में। बकेट 2 जो सीसी को दिया उसमें भी 10 करोड़। अब जो आप लोगों को जिसने पैसे दिए उसमें से 5 करोड़ इसको सौदा करना ही नहीं। ओके, मैं आपके क्वेश्चन को रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो जो, और मालूम है ये 5 करोड़ सौदा करने वाला ही नहीं है, तो करेगा तो एक दिन पहले बता के, बाकी 5 करोड़ सौदा करने वाले। सो कैन वी जो 5 सौदा करने वाले उनके एलोकेट करके रख दो, और जो 5 सौदा नहीं कर रहे उसको प्रो में डाल के रख दो। कैन वी डू दैट? करेक्ट। हाँ, मतलब आपके क्वेश्चन को थोड़ा रिफ्रेश किया और कुछ नहीं। इज देयर एनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट टू इंश्योर कि जो बकेट में आया उसको बकेट 2 में एलोकेट करना ही पड़ेगा? रोहाना सीजो, इज देयर, इफ यू कुड आंसर दिस क्वेश्चन। Uttam, as of today, we are not having any check on this point, but going forward, the checks may be put in place for this. So, I would not suggest that something like this be done. Yes, so, correct. So, in fact, I was going to say the same thing. Only thing is, my contention would be Nirmal ji ki अब जो segregation में pro का figure, so basically, I'll turn it around and say कि what you put in pro, the sum of that cannot be more than G. Okay. At a broad level. Okay. Because G, end of the day, G is our money. Correct? Correct. और हर ऑफिस, सेंसिबल ऑफिस रात को अपना G कैलकुलेट करता है, G बराबर, तो G का पैसा प्रो का पैसा, तो G के ऊपर आपका प्रो सीसी में होना ठीक नहीं। अच्छा, उसको क्लाइंट को एलोकेट नहीं करना तो अनएलोकेटेड में पड़े दो, बट प्रो को नहीं दो, ये ठीक नहीं है। अब आज के तारीख में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप कर नहीं सकते, बट ये तो बात नहीं है कि जब तक कानून नहीं होगा तब तक मैं सही नहीं चलूंगा, या मैं ग्रे एरिया में काम, सही तो क्या ग्रे एरिया में काम करूँ, तो दैट इज द आई थिंक द फीडबैक। कभी मैं शब्दों के चुनाव अप्रोप्रिएट नहीं होते, तो प्लीज बेयर विद मी। ठीक है सर, यही क्वेश्चन। राइट सर। राकेश जी, योर क्वेश्चन प्लीज। सबसे पहले तो सीजो जी ने बोला कि वो 4 बजे तक फंजिबिलिटी है। 4 बजे तक नहीं है, 3:30 बजे तक ही है। हम लोग ने प्रैक्टिकली किया था, मेरा उसके पास बात हुआ था, 4 बजे तक ही हो रहा है, 3:30 बजे तक ही हो रहा है। सेकंड, अगर कोई मेरा 2 अलग अलग क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में मेरा स्टॉक है, से फॉर एग्जांपल आईसीसीएल और एनसीएल में, तो मुझे ईओडी में आईसीसीएल से रिमूव अनप्लेज करना है और एनसीएल में रिप्लेज करना है, तो ये केस में सेम डे बेनिफिट नहीं दे रहे रिप्लेज का। करेक्ट सर, 2 सीसी में बहुत जोर है।
सर आप प्रो से दे सकते हो, 6 महीने तक तो दे सकते हो। वही पर ये तो गलत ही हो जाएगा ना, ये सॉल्यूशन नहीं है ना, मतलब अपने को तो सॉल्यूशन चाहिए ना बेसिकली, क्योंकि एक सेकंड इसमें ऐसा है, एमसीएक्स और एनसीडीएक्स का तो अलग ही दुनिया नहीं चल नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक राकेश भाई सोल्यूशन होगा। आज की तारीख में आप 2 सीसी में काम कर रहे हो, बराबर, क्लाइंट ने, और आपने सारा प्लेस सीसी 1 में किया हुआ है, बराबर, आप क्लाइंट को सीसी 2 में काम करने देते हो, करते देते हो कि नहीं? वो तो कॉमन लिमिट ही कॉमन जा रहा है ना। हाँ देते हो। यस, वो जो देते हो उसका जो पैसा लग रहा है वो अपने जेब से देते हो कि किसी और क्लाइंट का यूज करते हो? अपने प्रॉप जेब में से से दे- जा रहा है, हाँ, प्रॉप में से ही जा रहा है, तो बराबर। अभी भी जा रहे हैं। अब आज के बाद इसके अंदर जाने से पहले एक बार एलोकेट कर दो भाई प्रॉप का पैसा। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आपका काम नहीं रोक रहा। नहीं सर, इसमें इसमें भी कैसे है, मैं एक एग्जांपल आप देता हूँ। एलोकेट कर दो, वहां फ्री पड़ा हुआ है, यहाँ एलोकेट कर दो। ये एक चीज, जो कि एनी में हो रहा है आज की तारीख में भी, आपके वर्किंग कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं क्या होगा, सीबी का रिक्वायरमेंट ऐसा है, क्लाइंट ने जो आपको स्टॉक या जो भी कोलेटरल दिया है उसे ज्यादा आप अलोकेट नहीं कर सकते हो, ये रिक्वायरमेंट है। से फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने 1 लाख रुपीज का स्टॉक दिया आफ्टर हेयर कट, बराबर है। अभी मैंने रिप्लेस किया है एक्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में, क्लाइंट ने सौदा किया वाई क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में, मैं एक्स से निकाल रहा हूँ, तो उसका जो स्टॉक का बेनिफिट है, चांस में भी कि अगर मैं सर पॉइंट इज अगेन इसी को लेता हूँ। क्लाइंट ने आपको ₹1,00,000 का माल दिया, बराबर, आपने क्लियर कॉर्पोरेशन एक्स को प्लेस कर दिया, बराबर, अब क्लाइंट ने 50,000 एक्स में काम किया, 50,000 वाई में काम किया। बराबर, अब ये कह रहे हो तो शाम को मैं वाई में 50,000 एलोकेट कर सकता हूँ कि नहीं, यदि एक्स में 50,000 फ्री है? ये आपका सवाल है। इज इट अ फेयर सवाल? बराबर। हाँ, तो कैन सीसी आंसर दिस क्वेश्चन? कैन ही एलोकेट in Y 50,000 rupees if repledge of X is lying free up to 50,000 say? These are one question for both of you. Sorry, this one. I'll repeat the question again. Client has given 1 lakh worth of shares, and the member is placed in favor of Clean Corporation A. Now the client has traded in both segments, and Clean Corporation A में 50,000 margin due है, Clean Corporation B में 50,000 margin due है. Let's say 40,000 due है. Say, so can, because यहाँ 60,000 free है, and the other Clean Corporation, can I allocate 40,000 out of my own money, pro money? नहीं, वो तो कर ही सकते हैं सर। हाँ, तो is there any restriction on that? नहीं, मेरा क्वेश्चन वो है ही नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एक टाइम लिमिट देके रखा है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के, ये टाइम के पहले तक अगर रिप्लेस किया ना तो ही बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा So ये तो पुराना प्रॉब्लम है, नया प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम पुराना है, पर ये एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है ना। हाँ, सीबी के सर्कुलर के हिसाब से इनको टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा ना अभी बेनिफिट देने का, अदरवाइज तो अनप्लेज रिप्लेस कर ही नहीं सकते, या तो हर एक सेगमेंट। सर नो राकेश भाई, अब आप, ये एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम अपना है, मैं नहीं कहता कि ये प्रॉब्लम नहीं है, बट ये प्रॉब्लम एलोकेशन की वजह से आया, ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम एलोकेशन की नहीं, एलोकेशन की वजह से नहीं आया, ये प्रॉब्लम है तो एलोकेशन में अपने को इश्यू हो रहा है। कैसे हो रहा है सर? मतलब क्या क्या बिगड़ा, क्या वर्स हो गए? एक मतलब आज जो 20 जुलाई को आपको जो तकलीफें हैं, 1 अगस्त को तकलीफें बढ़ेगी कि सेम रहेगी? बढ़ेगी। नहीं सर, सेम रहेगी। बढ़ेगी ना सर? सर कैसे सर? अभी देखो, मैं एक एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने XYZ स्क्रिप्ट दी है मुझे, रिप्लेस किया है मैंने एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में, बराबर है। अभी वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में उसको बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, स्क्रिप्ट क्वांटिटी ब्रोकर वाइज और ग्लोबल लेवल एक लिमिट कैप है। अभी ये केस में मुझे कंपलसरी उसको रिलीज करके CMPA में मुझे रखना है स्टॉक? नहीं क्यों? तो कंपल्सरी कहाँ है? फर्स्ट अगस्त ऐसा कोई कंपल्शन नहीं ना, आप समझो ना, आप क्लाइंट ने 1 लाख का राकेश भाई, मैं आपका जो पॉइंट है मैं आपसे डिसएग्री करता हूं, लेट्स डिस्कस ऑन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसमें ऐसा है कि MCX NCDX सेकंड डे पे रिप्लेज रिलीज कर रहे हैं। ओके, तो ये तो मेरे लिए कुछ यूजफुल ही नहीं है, और ये समझ लो ये भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, ये खाली सर राकेश भाई, मैंने आपकी, मैं नहीं कह रहा कि आपके पॉइंट्स गलत है, आपके सारे पॉइंट दुरुस्त सही है। मैं खाली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आज के जो मुद्दे हैं, जस्ट लेट्स स्टिक टू एलोकेशन EOD, वरना सच्ची जनरल कंप्लायंस डिस्कस करने लगे जनरल इश्यूज जैसे तो बहुत नहीं, ये जनरल नहीं क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, मतलब जनरल आपके लिए रहेगा, पर जनरल नहीं है ये प्रॉब्लम। ये अभी वही रहा है जैसे वीरेंद्र जी ने भी बताया था, थोड़ी देर पहले वीरेंद्र जी ने भी यही बताया। सेकंड इसमें मैं बता रहा हूँ, अगर समझ लो कि ऑल करके किसी ने रिप्लेज किया है क्लाइंट ने, तो बाय डिफॉल्ट मेरा एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, से फॉर एग्जांपल NCL है,
मेरा लिमिट कॉमन जा रहा है, क्लाइंट ने वही लिमिट के ऊपर MCX में ट्रेड किया रात को 9 बजे, तो इसका मतलब है मैं F&O में समझ लो कि रिप्लेज वाला NCL में ऐसे ही रहने दूं और MCX में प्रॉप में से क्लाइंट को अलोकेट करूं। करेक्ट, जो आज भी कर रहे हो आप। नहीं, गलत है ना। एक्सचेंज ने क्या बोला है, मैं वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सचेंज ने क्या, सेबी क्या बोल रहा है कि क्लाइंट ने आपको 1 लाख रुपया एज ए कोलेट्रल दिया है, इन मतलब कैश या तो नॉन कैश आप उतना ही अलोकेट कर सकते हो CC में। अभी ये केस में क्या होगा, मेरा 1 लाख पड़ा है NCL में और क्लाइंट ट्रेड कर रहा है MCX में, 1 लाख NCL में भी दिखा रहा हूँ, 1 लाख MCX में भी दिखा रहा हूँ, 2 लाख दिखा रहा हूँ। हाँ, अब ये कह रहे हो यही कि तो यहाँ मैं पे पहला लास्ट, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन ही होता मेरा। तो ये जो मैं रिपीट किया और मैं हाँ। बोला ऐसे कर सकते हैं, जब मैंने CC से पूछा तो आपने जवाब दिया नहीं ये तो कर ही सकते हैं। नहीं, आपने क्या बोला कि प्रॉप में से अलोकेट कर सकता हूँ, प्रॉप में से कर सकता हूँ, पर आपको दूसरे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से रिड्यूस करना पड़ेगा। वही रिप्लेस तो रिड्यूस हो ही नहीं सकता ना, मतलब अनप्लेज करना पड़ेगा। नहीं तो फिर तो ये आपका पॉइंट समझा नहीं। ओके, क्लेम कॉर्पोरेशन, आई विल रीफ्रेज दिस क्वेश्चन। क्लेम कॉर्पोरेशन 1 में ₹1,00,000 का शेयर रिप्लेस किया है, जिसमें से खाली 40,000 यूज्ड है। क्लेम कॉर्पोरेशन 2 में विदाउट अनप्लेजिंग दो शेयर कैन आई एलोकेट 40,000 if 60,000 इज लाइन फ्री। राकेश भाई अब ठीक है? यस। हाँ, अब क्वेश्चन रिफ्रेश हो गया। Sijo, Rohana, because I'm going to report to both of you, please tell me, will you call it a wrong reporting or will you accept it as a reporting? Sijo, Rohana, you want me to repeat the question or you want time to respond to this, or you can respond it immediately? Uttamji, we got the question. I mean there is no, I do not see any provision which says whether yes or no for that. So maybe we'll look into it separately. But Sijo, please, on a priority basis, 1st August is on the corner. Some questions actually. As far as CC is concerned, I mean, your bucket, whatever amount you are pledged with CC, I mean, whatever amount you have given to CC in cash component, you can allocate to your clients based on your clients. इसके अंदर गुगली ये है कि there are 2 allocation. One is auto allocation, one is manual allocation. Whenever I do a repledge, it becomes auto allocation. अब एक जगह auto allocation हुआ है और unused है, उसके basis में extra manual allocation में मार सकता हूँ क्या? That is the question. Right. My first reaction is if it is unused, yes, but then the CCs have to confirm this. राकेश भाई, सॉरी मुझे आपका पॉइंट समझने में थोड़ा टाइम लग गया, बट ठीक है। हाँ। और सेकंड, this needs a response before 1st August. If you say no, it is no, but then I'll fight with you. Why no? But if it is yes, then you have to say yes. This is similar to the securities which are available with the CM but not pledged to CC. Yeah, because then it is manual. Then there's no auto replacing, no auto limiting there. Replace होते confusion हो गया, replace हटाते कोई confusion नहीं है ना? सीजो बेसिकली कैसे है, क्लाइंट ने NCL में 1 लाख का स्टॉक रिप्लेज किया है। अभी रिप्लेज रिलीज का टाइम आपका 6 बजे तक का लास्ट कट ऑफ है, वो टाइम निकल गया। राकेश भाई, मैं बोलता हूँ अनप्लेज करने की जरूरत ही नहीं, रुको ना। मतलब अनप्लेज में नहीं करता तो भी मैं कर सकता हूँ, ये मेरा कंटेंशन है। हाँ, वो हो गया, फिर अपना काम। मैं प्रो से पैसा डालने को तैयार हूँ, लेकिन आप बोलोगे कि तुमने गलत किया, तो बाद में वो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सीजो, रोहना, both of you. So please make a note of this point. In fact, I have not even thought about this. Rakesh bhai, very good point, यार। सेकंड क्वेश्चन ये है, मतलब आंसर दे रहे क्या सीजो जी, या बाद में देंगे इसका? नहीं, राकेश जी बाद में देते हैं इसको। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जितने भी वेंडर है, सब लोग ने CC02 या सिक्योरिटी अंडरस्कोर प्लेज, ये सब बेस के ऊपर ही BOD का या इंट्राडे का या EOD का फाइल फॉर्मेट बनाया है, कैसे अलोकेट करना है। पर CC02 के साथ में आज मैंने SA01 मैच किया, उसमें कुछ एक इशू आए थे, मैंने उसे के साथ बात किया। सेकंड, अपना सिक्योरिटी अंडरस्कोर प्लेज जो फाइल आ रहा है, वो फाइल मंथ के लास्ट डे में, से फॉर एग्जाम्पल 29 जुलाई इज द लास्ट डे फॉर दिस मंथ, वो उस दिन पे जो फाइल आएगा ना, वो 1st अगस्त को काम नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसा रहेगा कि कोई अप्रूव में से निकल गया रहेगा, किसी का ब्रोकर मेंबर लेवल या ग्लोबल लेवल का कैप की वजह से उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो चांस में भी मेरे लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप एक रिक्वेस्ट है, BOD में सुबह CC02 सिक्योरिटी अंडरस्कोर प्लेज के आज के दिन में कितना क्या बेनिफिट मिलेगा ना, एक फाइल वैसा मिल जाएगा तो प्रॉपर होगा, अदरवाइज ये नॉन कंप्लायंस पहले दिन ही हो जाएगा, 1st अगस्त को ही होएगा।
हेलो, 1st August मंथ एंड भी है, इसलिए डबल ट्रबल वैसे ना। हाँ मतलब समझ लो कि कोई स्क्रिप्ट था आपका जुलाई में अप्रूवल लिस्ट में था और 1 अगस्त को निकल गया। हाँ, तो होता है। मेरा डेवलपमेंट तो पूरा सिक्योरिटी अंडरस्कोर प्लेज के ऊपर बना हुआ है। तो मैं तो वही अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इसके ऊपर बेनिफिट मिलेगा। 1 तारीख को पता चला सीधा पेनल्टी लगा। सर उसका तो आंसर है सर, 20 तारीख को हम बता रहे हैं ना कि अगले महीने में क्या क्या सिक्योरिटी है क्या नहीं है। चलो आपने बताया क्या है क्या नहीं है, पर ग्लोबल लेवल मेंबर लेवल लिमिट है, वो थोड़ी उसमें हम लोग को पता चलेगा कि मेरे ही क्लाइंट को आप बेनिफिट दे रहे हो या दूसरे को बेनिफिट मिल रहा है। सर वो तो चेंज नहीं हो रहा है ना सर। नहीं ना, वो होगा ना चेंज सर हर एक अगर में। आपके क्लाइंट को या मेंबर को बेनिफिट मिल रहा था मंथ एंड में और वो सिक्योरिटी कंटिन्यू हो रही है, नहीं, तो से फॉर एग्जांपल से फॉर एग्जांपल किसी स्क्रिप्ट का क्वांटिटी लिमिट 1 लाख का है, बराबर है। आपके पास ये जुलाई महीने में 1.5 लाख का लिमिट था, तो 1.5 लाख में मेरा क्लाइंट आ रहा था। 1 लाख में मेरा क्लाइंट आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता है ना, क्योंकि आपको बट तो दैट लिमिट चेंजेस एवरी मंथ। यस अच्छा, मेंबर वाइज लिमिट, मार्केट वाइज लिमिट चेंजेस एवरी मंथ, यस, एंड दैट इज नॉट नोन इन एडवांस। वो उसी नहीं। दिन पता चलता है, 1 तारीख को। नहीं, वो 20 तारीख को पता चल रहा है, वो 20 तारीख को पता चल रहा है, 20 तारीख को पता चल रहा है। पर जुलाई महीने में 1.5 लाख क्वांटिटी का कैप था, वही अगस्त महीने में 1 लाख होगा। तो जुलाई में जिस क्लाइंट को मेरा बेनिफिट मिल रहा था, अगस्त में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो मुझे सिक्योरिटी अंडरस्कोर प्लेज से ही पता चलेगा। ओके, क्योंकि मुझे नहीं पता है ना मेरे आगे कितने मेरे पीछे कितने। करेक्ट, यू डोंट नो द क्यू। मार्केट वाइड तो डेली चेंज होता है ना उत्तम जी, हमने सुबह भी डिस्कस किया था इसको। नहीं, लेकिन राकेश भाई का एक अलग ही पॉइंट है कि सपोज मार्केट वाइड लिमिट कम भी हो गया तो भी हो सकता है अपने क्लाइंट को मिलता रहे। अब मैं क्यू में कहाँ खड़ा हूँ मुझे क्या मालूम। नहीं, जैसे सुबह बात किया हमने कि सीसी ये एलिजिबल रिप्लेस वैल्यू का जो CC01 में टी डे का फिगर आता है, वही फिगर हमको T+1 BOD के लिए भी चाहिए। अच्छा, हम करेक्ट एलोकेशन कर पाएंगे। सो वी नीड अ EOD एंड अ BOD फाइल। यस, क्योंकि अभी कैसे है ऑल तो अर्ली मॉर्निंग लिमिट सेट करने के लिए। अच्छा किशोर जी वाला पॉइंट। क्योंकि सर क्या हो रहा है कि जो भी सिक्योरिटी प्लेज फाइल आती है ना उसका वो रात को आती है, तो नेक्स्ट डे के लिए ना मेरे को कोलेट्रल वैल्यूएशन चाहिए T-1 के क्लोजिंग प्राइस में पैसा। और सेकंड चीज क्या है ये सब में सिक्योरिटी अंडर CC02 और AS01 करके जो फाइल दिया ना, CC02 में मेरे एक क्लाइंट को कैश का बेनिफिट दे रहे थे 1 लाख रुपया, AS01 में उसको बेनिफिट ही नहीं दिया। तो मैंने आज जोसेफा से बात किया तो बोला कि लॉन्ग डेटेड ऑप्शन का बेनिफिट इसमें मिल रहा है। तो CC02 में भी 2 कॉलम कर दो ना कि ये कैश का ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ये कैश का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरे पास रिटर्न में मिले आज, वो फाइल ही कल से आना चालू हुआ है। आई थिंक सजेशन तो नोट कर लिया होगा मतलब ये क्वेश्चन सीजो जी से। हाँ, सीजो जी के लिए सजेशन है ना ये कि ऐसा आप चेंज करते हैं। हाँ, क्योंकि मैं CC02 से सीजो जी सजेशन नोट तो कर रहे हैं। और सेकंड आपने जो प्रेजेंटेशन में डेरिवेटिव का मार्जिन बोला ना, अपफ्रंट मार्जिन, वो F और CD के लिए बराबर है, कमोडिटी के लिए स्पैन ऑप्शन बाय प्रीमियम एंड एक्सपोजर होएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन। और NRI क्लाइंट का MG13 में भी कैसा है, MG13 में T+2 तक अगर पेमेंट आ गया है PS अकाउंट से तो वो कंसिडर हो जाता है कि वो कलेक्टेड है। तो ये सर्कुलर में भी जो 5 पॉइंट्स दिए हैं कि अभी वीरेंद्र जी ने भी बोला कि 5 पॉइंट में एक NRI का पॉइंट है, तो सीजो जी ने बोला 17 मार्च 2022 का, तो सीजो जी ने बोला कि इंट्राडे के लिए, पर NRI के लिए तो EOD भी होना चाहिए ना एप्लीकेबल, क्योंकि NRI का बैलेंस ही आपका PI से T+2 तक आएगा। तो प्रो से अलोकेट हो रहा है तो अलोकेट होने दो ना, मतलब उसको पेनल्टी मत लगाओ। हेलो, यस सर। तो मतलब ये मेरा सीजो जी से क्वेश्चन है कि उसमें पेनल्टी मत लगाओ बेसिकली। से क्वेश्चन नहीं सजेशन है, ठीक। हाँ मतलब सॉरी सजेशन है। और MCX और NCDX के मेंबरों भी अगर पॉसिबल हो तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को उन लोगों को भी बुलाया करो सर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि अभी ये इनफैक्ट कॉमन। अपना अगला मंडे में एक सेमिनार है जिसमें क्लेम कॉर्पोरेशन के लोग भी है, वो इंस्पेक्शन वाला है, बट फ्यूचर के लिए हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नहीं, क्योंकि
आप बिल्कुल सही है, जैसे आपने बोला मैं स्ट्राइक कर रहा था कि काश M6 N6 वाले होते तो पूरा क्योंकि कंप्लीट हो जाता। ये खाली सो ये भी आपका सजेशन है, मैं नोट कर लिया। नहीं नहीं, ये खाली सेग्रीगेशन के लिए ही अनप्लेज का वो लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए फॉर एग्जांपल आज किसी क्लाइंट ने स्टॉक बेचा है और MCX में रिप्लेज किया है, तो सेकंड डे अनप्लेज करेगा, तो अभी तो T+1 सेटलमेंट आ रहा है, उसमें तो ऑप्शन हो जाएगा अगर टाइम पे रिलीज नहीं किया तो। हेलो, यस सर, यस राकेश भाई, मतलब ठीक है, आप सही कह रहे हो। ओके, थैंक यू। Kuldeep ji, your question, please. Kuldeep ji. Hi, Uttam ji. Actually, already addressed. The question is that. Sir, address है तो रहने देते हैं। Sir, ये place related ही है, replace. बोलिए। I receive pledge in all combined segment and replace also in all segment, but by default given limit by the CC in FN. And if the client use in currency, then should I report shortfall or I can allocate fund from Pro in that case? I think we can allot from Pro. But many back office has giving shortfall report in that case. It's a reputed. CJ, could you reconfirm this part? Because they're saying that it is already allocated in FNO. CJ, it's actually a variation of the same question. Yeah, sir. Actually, what is it? If the security is in segment 1, client is traded in segment 2, can I allocate my own money in segment 2? Even if the shares are replaced and they're lying free. CJ, probably in a couple of days we'll have to give. Yeah, I think that's the same question. Yeah, it's a variation of the same question. This is actually a very important issue to strike nahi kiya tha. And one more question. You are saying that we can add early paying benefit when we upload 6 o'clock final upload allocation. But if there is any sequence and the early paying is rejected or not uploaded, then आपने गलत किया। Hello? तो आपने गलत किया है। Oh, it might be possible the window is not. सर एक मिनट। जब क्लाइंट माल बेचता है तो पूल में आता है और अर्ली पेमेंट या जो भी है 2 स्टेप है। एक्सचेंज के सेक्टर में लिखा है तुम्हारे पास आ गया और तुम अर्ली पेमेंट नहीं भी कर पाए तो भी you can for sale side you can show margin as collected, but purchase side you cannot show as collected if your early payment fails. So allocation में भी short जाएगा और MG13 में भी short जाएगा, correct? But आप बोल रहे हो मुझे पता ही नहीं कि fail होगा कि नहीं। MG13 में तो मुझे पता है fail हो गया इसलिए मैंने short दिखा दिया, या तो मैं तो मान के चलूंगा fail नहीं होगा इसलिए मैंने इसमें collected दिखा दिया। That's the point ना? Without actually knowing fail हुआ कि नहीं मैं क्या करूँ? बैक ऑफिस प्रोसेस मैं अगर अर्ली पे को ऐड कर लूंगा तो वो प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं होगा। सही है। एंड ऑलरेडी शायद ये तो रेज हो चुका है कि एस फाइल आफ्टर 6 o'clock आएगा। But CJ, in this case, suppose I made a allocation under some assumption, and then it turns out that assumption failed for whatever reason. MG13 mein I am showing short, so anyway you're going to penalize me. So it's not a penalizable offense, right? Because it was going to be higher of the two, and I have paid penalty. So it's not that I've saved penalty or done something wrong intentionally. है ना? Yeah, I mean you are using in case that MG13 में वो shortfall आ गया तो आने ही वाला है penalty. हाँ. Yeah. So we can take that stand, ना? Kuldeep ji, it's a very good point, हाँ? एक कसम से यार, मैं सोचता हूँ मैंने सब कुछ सोच लिया है। CCs भी यही सोचते हैं। इसके बाद ऐसे पॉइंट्स आते हैं ना। So कुलदीप जी, लॉजिक ये है। Suppose आपने allocation में short दिखाया और MG13 में भी short दिखाया, तो penalty is highest of two. Suppose आपने MG allocation में full दिखा दिए, लेकिन फिर भी MG13 में short दिखाया है, तो उतनी की उतनी penalty तो लग गई आपको। तो पेनल्टी तो आपने बचाई नहीं, ठीक है? तो आपने कुछ गलत किया नहीं, क्योंकि गलत आदमी क्यों कहता है पेनल्टी बचाने को? आपने कुछ गलत किया नहीं, आपने MG13 में सही दिखा दिया। So I think CCs could take a lenient view on this.
we are talking about API failing because of technical issues, which will reflect in MG13 as shortage. है ना? Anyway, good point made and noted. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Harshji, your question, please. हाय उत्तम जी, ये जो आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्लाइंट वाइज कैश 50% रखना मैंडेटरी हो रहा है 1 अगस्त से, बट जो अभी करंट एक्सचेंज का जो फाइल आ रहा है उसमें तो 50% कैश का शॉर्टेज नहीं दिखा रहा है, वहां तो खाली सेगमेंट वाइज टोटल कोलैटरल को चेक किया जा रहा है खाली। बॉस हर्षजी, आप शायद मैं पहले भी 3-4 बार डिस्कस हो गया, मैं ये कह रहा हूँ कि क्लाइंट वाइज 50-50 चेक करें, लेकिन प्रो ने दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्लाइंट का पूरा शेयर दे सकता है यदि प्रो ने अपनी जेब से पैसे दे दिए, कैश दे दिए। और जो जैसे जो प्रो का पैसा है वो अपने को क्या एन मास में जाके मैनुअली ऐड करना पड़ेगा, क्लाइंट में क्या एलोकेट करना पड़ेगा? नहीं, आपको प्रो में एलोकेट करना पड़ेगा। तो अगेन हर्षजी एग्जांपल हो चुका है, फिर से बोलता हूँ, आपके 5 क्लाइंट है, उन्होंने करोड़ की शेयर दी है सपोज, और आपने प्रो में 5 करोड़ की बैंक गारंटी दे दी सपोज, टोटल। अब आप क्लाइंट को तो शेयर्स तो ऑटोमेटिक अलॉट हो गए रिप्लेस में, और जो 5 करोड़ के आपके पैसे आप उसको प्रो में अलॉट करो, ठीक है? उसके बाद तो उसके बाद 50-50 आपका हो गया। ओके, तो मुझे मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है? नहीं, कुछ करने की जरूरत। ऐसा नहीं कि प्रो का पैसा क्लाइंट को अलॉट करो 50-50 कैश मिलाने के लिए, ऐसी जरूरत नहीं। अच्छा, सेकंड मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग अर्ली पेन को लेके। अपने डिस्कस कर रहे थे अर्ली पेन 80% अपने एलोकेट कर सकते हैं, बट अर्ली पेन का सक्सेस फाइल तो 7 बजे आता है, तो कैसे अपने अभी भी कुलदीप जी से ही डिस्कस, वो एंड ऑफ डे फाइल है ना सर। आप एक्सचेंज का मार्जिन कलेक्शन का रिपोर्टिंग का पढ़िए, यदि आपने अर्ली पेन शाम तक भी कर दिया, जस्ट डीम टू बी कलेक्टेड ड्यूरिंग द डे, ऐसा ये शब्द नहीं है, लेकिन ये भाव मैनुअली कुछ अर्ली पेन का भी डालने की जरूरत नहीं है 80%, राइट? क्लाइंट वाइज वो मैनुअली एलोकेट करना पड़ेगा ना अर्ली पेन का। तो जैसे अपना मानिए 3:30 बजे तक जो टोटल ट्रेड फाइल आता है, इनफैक्ट अर्ली पेन का एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, एग्जांपल मतलब मुझे ध्यान नहीं, एक बार देखिएगा जो वापस, क्या उस पर आपको जवाब मिल जाएगा। नहीं मैं खाली समझना चाहता प्रैक्टिकली अपने करेंगे कैसे? तो प्रैक्टिकली ऐसे होगा कि कोई आप सीएनसी में सेलिंग अलाउ कर रहे होंगे और उसके सामने बाइंग अलाउ कर रहे हो, करेक्ट? हाँ या ना? राइट। हाँ, तो आपके क्लाइंट ने सपोज हाँ 100 रुपए का माल बेचा, तो अपना फ्रंट एंड ऑटोमेटिकली उसका 80 रुपये दे दिया, ठीक है? ऐसा जो भी हुआ आपको 3:30 बजे एक बार ट्रैक लेना पड़ेगा, भैया क्या हुआ, और आपको प्रो से 3:30-4 के आसपास उसको एलोकेट कर देना, ताकि 6 बजे का जो डेडलाइन या 8 बजे का डेडलाइन है तब तक सारा काम हो जाए। तो बाद में जब इंस्पेक्शन टीम जब आएगी तो वो तो बोलेगी ना भाई क्लाइंट का तो लेजर बैलेंस था नहीं, तो आपने ऐसे ही कैसे एलोकेट कर दिया? तो आपको सर्कुलर याद हो तो यदि कोई अर्ली पेन करता है, यू आर सपोज्ड टू पोस्ट इन द लेजर इन द सेम डे, ऐसा एक्सचेंज का एफयूक्यू कहता है, करेक्ट? और सब लोग एक वर्चुअल लेजर एपीआई का सेकंड लेजर चलाते हैं, करेक्ट? आप डेली जो फाइल लोड करो सेग्रीगेशन का, उसका एपीआई का कॉलम है, करेक्ट? हाँ जी, आपके आवाज राइट। तो फिर कैसे तो इंस्पेक्शन वाले को वो दिखाएंगे, एक्सचेंज वालों को एक्सचेंज का सर्कुलर दिखा देंगे, राइट? ओके। और मेरा एक जो आरआरएम ग्रेटर देन 90% जो है, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, जो आरआरएम ग्रेटर देन 90% है, तो जो मेरा एनमास का पेज है वहां पे आरआरएम ग्रेटर देन 90% दिखाता है 2 करोड़ और टोटल मार्जिन यूज दिखाता है 80 लाख। तो इसका लॉजिक मैं समझ नहीं पाया। अगर आरआरएम ग्रेटर देन 90% है 2 करोड़, तो टोटल मार्जिन भी तो 2 करोड़ के ऊपर ही होना चाहिए। सर उसमें ये होता है, व्हाट इज हैपनिंग देयर इज दैट उसमें अगर आप होवर करके देखेंगे तो उसमें एक फॉर्मूला है दैट कि जो क्लाइंट सीएम का जो कैश का एक्सेस कैश का जो बेनिफिट आपको मिल रहा है, दैट इज रिफ्लेक्टिंग देयर, सो दैट इज व्हाई वो नेट ऑफ होके कम हो रहा है। सर वो आपको मैं 1-on-1 भी आपको बता सकता हूँ, यू कैन, आई मीन वी कैन शेयर एन एग्जांपल। परफेक्ट, थैंक्स फॉर द रिस्पांस सीजर। I'm moving to the next question. Parth ji, your question please. Hello.
उत्तम जी, मेरा एक क्वेश्चन ये 50-50 एलोकेशन के हिसाब से है। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मेरे पास सिर्फ समझ लो एक ही क्लाइंट है और मैंने प्रॉप में 0 पैसे रखे हैं। तो द क्लाइंट हैज गिवन मी 50 रुपीज कैश एंड 100 रुपीज स्टॉक्स जो मैंने रिप्लेस करके रखे। टोटल लिमिट 150 रुपए की है। क्लाइंट ने पूरा सौदा मारा 150 रुपए का। डब्बा बंद। डब्बा बंद। अच्छा, डब्बा चालू रखने के लिए मुझे कितना कैश प्रॉप में रखना चाहिए? क्लाइंट ने 100 शेयर दिए, 50 कैश दिए ना जी। आपको 50 कैश रखना पड़ेगा। 50 कैश रखना पड़ेगा प्रॉप में। अज्यूमिंग ऑफ 90% आरआरएम का एक बार मैं कॉम्प्लिकेशन मैं साइड में रख देता हूं उसको। साइड में रख 50 प्रॉप में कैश। ओके, but that's so nice. I like this part. A specific question, a specific example, easy to answer. Thank you. 50% of collateral. ठीक है, okay, thank you. Mandar ji, your question? Yeah, that is already answered. Thank you, Mandar. Same question was already asked. Sridhar ji, your question? Vikas ji, your question? I think Ujjwal, we could just lower all hands. कई लोग हाथ raise करके फिर lower करना भूल जाते हैं. Somebody wants to raise the hand again, right? Yes, sir. Yes, sir. I've done it. Vikas ji, your question? Sir, just I would like to know that we are not being हम लोगों को क्या हो रहा है कि prop fund, मतलब हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक, prop fund के अंदर पूरा fund allocate कर देते हैं, क्योंकि हम लोग prop trading नहीं करते हैं as a broker. तो अभी क्या कर रहे हैं, सारा फंड प्रॉप के अंदर कर देते हैं और उसके बाद क्लाइंट को हम लोग लिमिट इशू कर देते हैं कि आप लोग ट्रेड कर लीजिए। तो उस केस में क्या हो रहा है कि क्लाइंट का फंड है तभी हम लिमिट दे रहे हैं बेसिकली। तो उस केस में हम लोगों को शाम को रिपोर्ट करना चाहिए कि हम लोगों को सुबह ही क्लाइंट को एलोकेट करना है और उसके बाद चीजों को करना है। विकास जी, इस पे पूरा डिस्कशन हो गया यार, ऐसे क्या कर रहे हो? नहीं, पूरा डिस्कशन हुआ सर, बट थोड़ा सा क्लैरिटी ये चाहिए था। अभी सारे के सारे, मतलब सारे तो सही, काफी लोग बाजार के एक बार प्रॉप में डाल के बैठे हुए, चाहे क्लाइंट का हो जिसका, सब प्रॉप में डाल दिया और थोड़ा थोड़ा कोई थोड़ा एलोकेट करता है, देखते क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, आपकी सॉफ्टवेयर बना रहे, फाइलिंग कर रहे, सब कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बीच में मेंशन किया, आपके जो प्रॉप फंड में आप जो एलोकेट करते हो, यदि आपका जी है उससे ज्यादा करते हो तो सिद्धांतिक रूप से शायद गलत है। ओके, जिस क्लाइंट का जितना पैसा इतना लिमिट दे रहे हो, आपको उसको एलोकेट करना चाहिए, वही सही तरीका होना चाहिए मेरे हिसाब से। स्टॉक से तो उस केस में क्या हमको लेजर बैलेंस अपलोड कर देना चाहिए? हाँ विकास जी, मतलब वी हैव टू अपलोड लेजर बैलेंस ऑफ द क्लाइंट टू द सीसी। ये एक पूरा बकेट 1 है, लेजर बैलेंस इज पार्ट ऑफ बकेट 1, व्हाट यू गिव टू सीसी इज पार्ट ऑफ बकेट 2। जो बकेट 1 वाले सौदा करना चाहते हैं वो बकेट 2 में आपको एलोकेट करना चाहिए। ओके, हाँ जी सर। ओके सर। Rakesh ji, your question, please. हेलो सर जी, जैसे बीओडी में एलोकेशन का फाइल अपलोड कर दिया चारों सेगमेंट का, अभी आप बोल रहे हो कि 6/4 तक उसका एंड ऑफ द डे भी अपलोड करना रहेगा? बिल्कुल नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा कि बराबर है कि नहीं सब कुछ, कि शॉर्टेज तो नहीं। बराबर है, खाली वेरीफाई करना है, वापस अपलोड नहीं करना। नहीं, हाँ तो सर जी कैसा है, अगर किसी ने एफओ में यूज किया और मेरा एलोकेशन कैश में है तो उसको वहाँ कम करके वहाँ बढ़ा दो। हाँ तो सर सिंगल क्लाइंट का हो गया, अगर ऐसा मेरे 15-20 क्लाइंट हो गए तो क्या करने का, क्योंकि MG13 है वो भी 8 के बाद आता है चारों सेगमेंट का। सर मोटा मोटी या फ्रंट एंड में जजमेंट तो आता है ना, किसने कितना यूज किया। एक थोड़ी मेहनत करनी, सब मेहनत करनी पड़ेगी, कानून है, मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा थोड़ा जजमेंट है, वो 4 फाइल आती है ना इंटरडे। हाँ बराबर है, ठीक है, वो चौथी वाली फाइल उठा के उससे भी जजमेंट आ जाता है, मोटा मोटा, परफेक्ट तो नहीं लेकिन मोटा मोटा आने को तो एनमास पे भी फाइल आता है मार्जिन यूजेस का। बिल्कुल बिल्कुल, एनमास में भी आता है। हाँ तो उससे जजमेंट तो आ जाएगा ना, वहां से फिर उससे मैनुअल चेंज करके फाइल अपलोड करने का एंड ऑफ द डे। थोड़ा एक्सेल में थोड़ा मेहनत तो हो जाएगा। ऑफिस में 2-3 बच्चों को बोलो, रास्ता ढूंढ देंगे सर, लेकिन रास्ता ढूंढना पड़ेगा, इसको कोई चारा नहीं है। या बैक ऑफिस वाले को बोलो, वो आपको रास्ता बना के देंगे। ओके Karan ji, your question, please. Mithil was before Karan. We speak, not yes. Mithil ji, your question, please. Sorry. Hello. Hi Mithil. Hi, Yogesh बोल रहा हूँ. Yogesh भाई बोल रहा हूँ. See, my question is when. I think Mithil, there's some problem at your end. Hello. हाँ बोल.
We are Mithil, your voice is The echoing. sound and is There's yes. more than one person on the same Zoom call in the same room. That's my guess. Hello. Mithil को mute पे रख के Karan जी पे चालू करो. Till Mithil adjusts. Karan ji, your question, please. Karan ji, Karan Thakkar, your question. Am I audible now? Yes, please. Yes. Thanks, Sanji, for this webinar. It's helping a lot. We discussed a point on custodial settled clients for institution, non-institution. So for a PMS custodial settled After 6 months, sir. नहीं End of day 0 हो जाएगा ना उसका तो. नहीं समझो उसका कस्टोडियन ने एक्सेप्ट नहीं किया आफ्टर 6-7 o'clock द मार्जिन ऑफ तो आज के तारीख में MG13 में क्या दिखाते हो? So उसका क्लाइंट का शॉर्टेज आएगा but we'll put it in error. No, the trade no, sorry, this will not go to error, but the margin shortage will happen, continue to happen the way it will. But in this case again the allocation will also be considered as See, in this case MG13 में भी पूरा शॉर्ट गया, allocation भी 0 है, वहाँ भी शॉर्ट गया, penalty is highest up to. Double penalty नहीं लगेगा. Single penalty हो जाएगा. Anyway, fine. Second is that I don't know if this is something we can ask the CC, but currently penalties may provisional penalties may start coming before first. That is our expectation. But the major point of worry here is that if there are any miscalculations, the RRM is the culprit, which may be a surprise factor on first. So if there is some way where in RTRMS or real-time management or NMAS, if CCs can somehow indicate that if in the current situation, if the broker is going in RRM before the 1st of August, keeping in mind the 1st of August regulation. So, if there is some mistreatment on 1st August morning, we shouldn't have a surprise. Current, the solution is to 28th July से allocation शुरू कर दो. Don't wait for 28th July end of day कर RRM होगा तो पता चलेगा अरे RRM किए बिना सी कितना भी थियरी कर लो जब तक करते नहीं ना नहीं जजमेंट आता. वो तो in any case we'll have to do it only, right? Because the 28th settlement will happen on the first morning. So first morning को 2 घंटा तो उसका margin block रहेगा ही. So allocation we'll have to start doing before. Yeah. Don't wait for first. It's very dangerous. Correct. And one more thing, that if a client sells the shares in squares of on the same day, we allowed it to sell based on the assumption of the EPI happening at the end of day. In तो case MG13 में MG13 के पीक में अटकता नहीं भैया. नहीं आएगा, but there was a provision, right, that if you are having the shares, आप एक बार पे इन कर दो और वो return आता है. हाँ, मतलब you have to take it to full. हाँ. But then the issue in this case of allocation will be such that so not for 6. It's not a 6 month fixture. उसके बाद will be issue. Because end of day margin 0 हो गया ना, काट लिया. नहीं end of हाँ ठीक है, correct, वो peak तो नहीं गिन रहे, right? And in case of F&O expiry, the day of expiry, like Virendra ji also pointed out that if we are also doing our math on based of front end margins at 334 and doing the allocation accordingly, but the expiry allocation margins will be different. So for that, we should plan with that. So the solution is 2. The immediate solution, which is a horrible solution, you'll beat me for this, but फिर भी number 1 जितना भी मार्जिन आता है उससे थोड़ा ज्यादा allocate कर दो, ठीक है? Number 1 वो नहीं कर सकते तो एक बजट रख ले इतना पेनल्टी अकाउंट कि धंधा करना है इतना पेनल्टी का खर्चा लगेगा. Don't beat me for this, but there's no other way ना करें. We can go on beating saying कि theory in theory गलत है ये, but काम तो करना पड़ेगा, जीना तो पड़ेगा ना यार. मतलब हाँ नहीं, just raising this point, so CC yeah. 30 days, 60 days, 2 months, 3 months कभी yeah, that was a super point made by Virendra, no doubt about it. Uttamji, one more thing to add on that is that we are sending EOD span file. I mean, the span file is there. What time? No, EOD span file comes immediately. After 3:30 as well as that people can. So if people have the software, they can calculate on their own. Yeah. Okay, but the final span file comes by 3:34. 3:30 वाला आ जाता है, end of day वाला भी आ जाता है. Of course. But I think the span might be known, recalculation हो जाएगा, that is fine. But वो settlement price के basis पे होता है, right? तो वो तो बाद में ही मालूम पड़ेगा ना. Settlement price is the closing price of a cash settlement, right? I think it span at the end of the span gets calculated based on the prices of settlement of options, right? अच्छा ठीक है. थोड़ा minute फर्क आता है. But if it is minute, current will have to manage it. मतलब थोड़ा सा हर किसी को 1-2% ज्यादा allocate कर दे. कुछ तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा ना. ठीक है, fine. If anybody is doing that kind of business of that level,
would have the sophistication. Hopefully, you should have to build the sophistication to but survive the basically this will compliance. always like it will be an estimated risk. Yeah, thoda, come on. And well, we have to move it. This is a beautiful change that is coming. You know, accidental use of one client for others will also stop. And most decent brokers will not have a problem with this. Right. There are just operational issues. Not Yes. Okay, one more thing. In case there is a repledge security which we allow to sell today, we unpledge it and we do the early paying on the same day. Correct? But since we the repledge securities will be released, and at the end of day the early paying will happen at say 8 or 9 o'clock or something of that sort. So end of day margin zero हो जाएगा ना? This, so my only question is that the value of EPI will not be able to allocate, right? So you're saying that because we are already considering repledge, so we will not do manual allocation, जबकि repledge will be disappear. Yes, so that repledge value, will it be considered before 330 जो था कि जब भी वो लोग calculate it's end of day is end of day. So then this will be a so point is, if you know a repledge माल बिकने वाला है, then you'll have to remove the repledge value. The early paying will happen and do the allocation. But if you do that, then like I think there was one more question was raised that if it's already allocated automatically, how can I do additional allocation from Pro? So we're talking about end of day, right? Next 6 months. End of day. See, there'll be two figures. One is end of day margin due. One is end of day what's available in allocation. One is auto, one is manual. Auto में जो repledge है end of day तक zero हो जाएगा. Assuming वो बिक गया. पर manual में तो manual में ऐड करना पड़ेगा API के हिसाब से. Correct. पर वो time early paying तो समझो 8 बजे हुआ. No, we have to anticipate. We know at 4 o'clock किसने बेचा नहीं. No, we can anticipate and do it. But say at 6 o'clock, if I've anticipated and allocated from Pro, at that time, what is happening is auto allocation तो होके रखा है already. So you're saying at 6 o'clock I've kind of technically violated. Yes, because I've done more than what I'm. But it's at the end. It's an end of the process, so I guess it should be. But again, a very, very interesting and a very technically interesting point. But यार 6 बजे थी मैं पहले कर दिया, रिप्लेस बाद में छूटा. So in theory मैंने extra allocate कर दिया जो मैं नहीं कर सकता, है ना? वाह करण. Yeah, good point. I don't think there's a even CCs are going to respond. The only thing is that inspection is very difficult to explain these things. So okay, but what happens is usually after we have this video, we run through the seminar again, make the notes, and make a representation. This point has come on record. Okay. We will try to find an answer to this in form of hopefully FAQ. Okay, and this is my last thing. I'm sorry. Yeah, please. I'm loving the point. The settlement issue which is there, which is on T+2, there are two things happening. One, whose pain is supposed to happen is funds. So the 6 months later issue, na? Abhi the end of day we stick karte hain. Thank you so much. Thanks, Karan. Mahendra ji, your question, please. Yeah, Uttam ji, same thing on the early paying. Say, for example, in the morning, one of our clients sold the stock 1,000 Reliance, and we received the stock in a pool account. And collectively, across all my sale deliveries, we are executing the early paying by 8 o'clock in the evening. So, is there a need for a pure sale transactions to do pre-trade allocation? So, pure sale, no. Because for next 6 months. Pure sale trade, no issue at all, right? If we receive the stock for next 6 months. Okay. Okay, that's cool, because the pure sale trade only we were worried because we don't do it in a piecemeal, right? We do it all together across all clients. That is one thing. And sir, second small clarification. Say, for example, we create the client has created the pledge in favor of the broker, and by the time you execute the repledge of securities with the clarification with the exchange clearing corporation, what should be the cutoff? नहीं सर, end of day तक हो जाएगा ना. End of day तक हो जाएगा. तो 6 बजे तक कोई प्रॉब्लम नहीं. नहीं सर, 6 बजे तक 6 o'clock may not be the final EOD time. Is it okay if we execute by 7 o'clock or 8 o'clock till EOD? Repledge. सर CC आपको इतना लेट करो तो CC आपको देता नहीं लिमिट से repledge पर. सी क्लाइंट ने आपको 2 बजे प्लेज किया सपोज. करेक्ट. तो अब आपने CC को 3 बजे प्लेज किया. ओके. तो शाम को जो CC की फाइल बनेगी उसमें रिप्लेस दिखता है.
बट यदि आपने सीसी को रात के 8 बजे रिप्लेस किया तो सीसी अगले दिन ही उसको कंसिडर करता है। अग्रीड सर। तो सीसी अगले, तो जब सीसी कंसिडर करेगा तभी आप उसको कंसिडर कर सकते हो। नहीं सर, द प्रॉब्लम इज, टेक्निकल पॉइंट इज, से फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने ओटीपी कंफर्म नहीं किया, सो टिल द टाइम क्लाइंट डज नॉट कंफर्म द ओटीपी, तब तक वो आप हमारा सौदा भी नहीं कर प्रीपेड सकते। एलोकेशन नहीं हुआ सर, वी डोंट आप कम टू नो। आप सौदा भी नहीं कर सकते। करेक्ट, बिना मार्जिन ये सौदा कैसे किया आपने? got it sir. सही, यहाँ वहां फंस जाओगे। Yeah, but sir, thank you very much for pure net sell deliveries. We were worried कि उसके लिए भी pre-trade करना है, then it's a big challenge. 6 महीने तक कुछ नहीं करना, उसके बाद तक। Okay, thank you. Ravindra ji, your question please. Yeah, hi. So Uttam ji, there are 2-3 queries. One, कि allocation there is a shortage EOD, and margin reporting में I have reported as a sufficient margin collected by considering pledge securities and EPR. Could you repeat the question again, Ravindra? Hello. So allocation file, EOD allocation file, okay, I have reported. So there is a shortfall ki like because there is a requirement of 4 o'clock margin has to be this allocation file has to be reported to exchange, right? But MG13 margin collection reporting जो है उसमें I have mentioned कि like sufficient margin is available. Penalty highest of 2. So penalty of highest of 2. लग जाएगा। तो so allocation में penalty आएगा, then but margin collected में I am showing नहीं आएगा। तो नहीं आएगा, right? नहीं, margin collection में नहीं आएगा, लेकिन allocation में आएगा तो penalty लगेगी अब। Okay, so I think on that basis then every broker will get a penalty. No. Because allocation tentative allocation margin देख के tentative figures अगर report करेंगे exchange में तो because boss bucket 1 client से माल आया ना आपको, okay, वो आया, वो करो, उससे यूज किया नहीं करा, allocate कर दो ना। यदि अब सिंगल सेगमेंट में तो कर सकते हो, मल्टीपल सेगमेंट मल्टीपल एक्सचेंज में चलो प्रॉब्लम, तो सिंगल सेगमेंट में उनको तो कर सकते हो ना। नहीं बट वो भी क्लाइंट, मैं आपका क्लाइंट हूं, मैंने आपको 5 लाख का चेक दिया, अब 5 लाख एलोकेट कर दो ना, फिर मैं 1 लाख का सौदा करूं, 50,000 का करूं, 20,000 करूं, मेरा प्रॉब्लम है। नहीं अभी मेरे केस में क्या है, पीसीएम है एंड F&O ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड थ्रू पीसीएम। तो पॉइंट है सर, रास्ता ढूंढना पड़ेगा रविंद्र भाई, अपने हर चीज का ढूंढ सकते हैं, ये तकलीफ और बट बहुत सस्ता ढूंढना पड़ेगा, ऐसे नहीं करोगे। नहीं बिकॉज़ एक्सचेंज का जो आप सर्कुलर है, आप ये कह रहे हो कि एमजी तेरा में फुल रिपोर्ट किया लेकिन एलोकेशन में फुल रिपोर्ट नहीं किया, क्यों? हाँ नहीं बिकॉज़ एलोकेशन में सेगमेंट वाइज मुझे रिपोर्ट करना है, राइट? हाँ तो क्यों नहीं किया आपने रिपोर्ट, बताइए क्यों नहीं किया? नहीं अभी सेगमेंट वाइज, अभी सपोज कैश तो एमजी तेरा एमजीटीएम में तो सेगमेंट वाइज है। नहीं बट वहां पे मैं कॉमन ले रहा हूँ ना। कहाँ कॉमन ले रहे हो यार, सेगमेंट वाइज दे रहे हो ना। नहीं MG13 जो है उसके लेजर बैलेंसेस वगैरह जो भी है वो सब मैं कॉमन ले रहा हूँ। लेकिन स्प्लिट तो करते हो ना 2 फाइल में। नहीं दो फाइल में स्प्लिट कर देता हूँ, बट तो एलोकेशन में स्प्लिट करो। ओके, जो MG13 में करना है वो एलोकेशन में करना है, लेकिन पहले करना है, बस उतना फर्क है। हाँ पहले करना है, बट MG13 अगर डिले हो जाता है देन एग्जैक्ट अमाउंट अगर नहीं मिलता है then there will be a small shortfall amount, वो possibility है। तो मैं उटपटांग सॉल्यूशन दिया था ना। हाँ नहीं बट एक एक्सचेंज का सर्कुलर है, penalties for short allocation and short margin reporting, okay, in order to avoid duplicity of penalty levied for the same violation, the penalty for short collection short margin shall be combined, and so on that basis is there only there won't be penalty applicable, क्योंकि मार्जिन कलेक्शन में MG13 में मैंने रिपोर्ट किया। You want to read it that way, Sijo? No, so the point which you are referring in the circular is exact telling the same thing, that we are not going to duplicate the penalty. The penalty will be higher on the shortfall of higher of the 2. Correct, Sijo, that's true, but customer has provided sufficient margin is available with me. But okay. But why did you not report it? Why did you not allocate it? अरे मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैंने आपको 100 रुपए दिए, आपने एलोकेट क्यों नहीं किए? नहीं अभी सपोज MG13 में तो 100 रुपीज मैंने कैश सेगमेंट में एलोकेट कर दिए, ठीक है, सिक्योरिटीज उसके जो है F&O में पड़े हुए हैं, ओके, एंड जब मार्जिन रिपोर्टिंग में आई एम कंसिडरिंग अक्रॉस ऑल,
and I'm reporting. But रविंद्र भाई allocation is segment ये wise. सारे पॉइंट हो चुके हैं रविंद्र भाई. Yeah. पिछले 1-2 घंटे में कम से कम आधे घंटे तक ये वाला पॉइंट डिस्कस हो चुका है रविंद्र भाई. I think I'll have to I'll request you to Okay, fine. Second point, replace securities जो है. So if client sells replace securities. अच्छा एक मिनट विस्पी प्लीज वीरेंद्र भाई को पैनलिस्ट अपडेट करो. हाँ बोलिए रविंद्र. Yeah. So if my client sells replace securities and if I send this release request, then if margins are blocked, then those securities, can these securities be released? Because I face some issue. Can the CCs answer this question? If a client has replaced security and there's a margin due, आप securities replace securities छोड़ने दोगे कि नहीं? क्योंकि already utilize complication number 3 because margin है इसलिए replace नहीं छोड़ने दूंगा. ऐसा कोई लॉक है आपकी खाली फंड्स के लिए? सर सिक्योरिटीज रिलीज हो जाएंगे. ओके. सी जस्ट क्लैरिफाइड बॉस. Okay. And prop का prop you will adjust against prop. Yes. Okay. Next point is EOD allocation file. So EOD allocation file अगर मुझे report करना है, so I have to take it into account the 90%, more than 90% amount needs to be allocated. No. EOD allocation is just bucket 1, bucket 2, nothing to do with 90. Okay. And EOD is a function of bucket 1. Sorry. Okay. And next is there was one point got discussed, like in case of debit balance, zero balance need to be updated. But negative allocation का option. Negative allocation का option नहीं है. But ये जो offsite allocation, मतलब ये जो offsite exchanges they are doing this inspection, I think उनके alert में आ जाएगा. We have done allocation excess. Whereas customer was not having that allocation है तो association को बताना, हम झगड़ा करेंगे. ठीक है आपके भी. Okay. Fine. Thank you. So Virender ji had a question. Virender bhai is now panelist. Discussion आप कर रहे थे on .s file. In this you have forgotten one small factor. From 1st August, intraday margin is on the opening day file, not on the end of day file. 1st August से चेंज करवाया ना रूल की इंट्राडे बढ़ जाता है ब्रोकर को क्या. हाँ तो रेट ऑफ मार्जिन इज फिक्स्ड. हाँ तो अभी 1st August से दैट सिनेरियो इज चेंजिंग. पूरा दिन तो आप .i01 पे ही चलोगे. हाँ फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस. करेक्ट. एंड EOD रिपोर्टिंग फिर से आप .s फाइल पे आ जाओगे. तो वो जो था फिर डिफीट हो गया. रेट ऑफ मार्जिन स्टैंडिंग पोजीशन में मैंने क्लाइंट को स्क्वायर अप कोड में डाला, तब भी मेरे को पेनल्टी लगा दो. नहीं ये कैसे हुआ? Point is for the purpose of peak margins ना .01. पर्पस क्या था कि क्लाइंट ने 100 रुपए के सामने 100 रुपए का सौदा किया और उसके बाद उसको स्क्वायर अप मोड में डाल दिया, उसको कुछ काम नहीं करना. अब मार्केट बढ़ गई, उसका मार्क टू मार्केट आ गया या ऑप्शन में उसका डेबिट खड़ा हो गया, उसका मार्जिन बढ़ गया, तो 100 का 110 रुपए तो मेरे को पता ही नहीं है कि कितना चाहिए उसको पीक के लिए. तो बोला पीक के लिए हम I01 यूज कर लेंगे. बट सेम प्रॉब्लम विल रिमेन फॉर .s आल्सो. नो नहीं, so peak will not change. EOD will be still a problem. EOD will still remain to be a problem even if the client is in a square up mode. Correct. तो उसका भी सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा. Correct. वो this was discussed at SEBI. अब बोले कि boss, why have we increased the margin? Because there's a risk has gone up in this exchange, in the system. ठीक है, तो कुछ रात तक का टाइम दिया, रात तक पैसा लाना पड़ेगा, वरना पेनल्टी दो. Anyway, this is okay, so that is a separate, but I was trying to say people when they are trying to figure, I mean they have to account for 1st August से और भी छोटी-मोटी changes हैं. हाँ. So the rate of margin for the entire day will remain the same, but end में टक करके there will be a gap up, gap down. Correct. नहीं, बाकी वो calculation हो सकती है. See, most people have that software which will calculate. Yes. And it is entirely viable to do the same by 4:30. Yes. Virender bhai, please stay on the call now because then I've just given our panelist. आपको पहले बताना भूल गया. Sorry. Next question. Mittal ji, your question, please. Hi, Yogesh here. I am audible now? Yes. अब आपकी आवाज सही. Currently, I'm a member is with ICCL SCM for all segments.
and we have placed the stocks, replaced the stocks with clearinghouse for all segment, across all segment, selecting across all segment. सबमिट करेंगे कैश के तुरंत ये पेज शुरू करके Continue, please. In case the allocation for cash segment and for FNO segment, we need to unplace the stock from for cash segment and FNO segment respectively, or how? You Or should we can unpledge from there and replace there. That is what is required. We have requested CCs. कि बॉस यदि FO में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और कैश में शॉर्ट है तो पेनल्टी मत लगाना. Same clearing house. हाँ सेम क्लिक ऑपरेशन है, क्यों लगा रहे हो यार, मतलब क्या मजा आ रहा है. तो they are considering it. They considering fungibility. They are considering for considering जब होगा तो होगा. अब but 2 दिन हो गए, 2 महीने हो currently गए, how 2 साल. we need you'll have to speak to your CC. Okay, unpledge. We'll have to unpledge and we'll You have to speak to your place. CC. Different CC may have a different process. You have to speak to your CC. Okay. Okay, sir. Thank you. Dikkarji, your question, please. Yeah, just one small question. If there was an institutional trade and while modifying the trade, the CP was removed and then again it caught in peak margin. Okay, and afterwards it's a peak margin issue. It's an existing issue of MG13 and MGTM, right? Yeah. It is nothing to do with allocation, sir. EOD allocation. So please hold on to it. No. Just one thing. Because I faced the issue. That's why I wanted to. So is it anything to do with EOD allocation? Yeah. Boliye. So supposingly, for example, 123 is my client code. Okay, it was an institutional trade and he did with INST. And supposingly for modification and all purpose, I had to remove it and then again I had to reassign it. But peak margin it got captured and the margin is got captured. So end of the day, the margin I need to report. So for that client, I don't have any funds. Okay. MG13 में क्या दिखाते हो? MG13 में for institutional client it says that it should be reported as collected. But मेरे को EOD मार्जिन पे वहाँ पे अगर मैंने रिपोर्ट नहीं किया 123 क्लाइंट कोड तो वो तो मेरे को सीधा पेनल्टी दे देगा शॉर्ट पैसा. हाँ. So जो आप आज के तक में MG13 में करते हो वही आपका एलोकेशन में करना है फॉर इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स. पर अरे ये मेरे को उसी दिन पे करना ही पड़ेगा मैंडेटरी, पर उसका कुछ पैसा तो रहता नहीं है. पर आई शुड रिपोर्ट एज कलेक्टेड because whatever you do in MG13 which is permitted by law, that is what you have to do in allocation. Okay. Because I'm not sure what you're doing, I've not understood, but the basic principle is this: for institutional trades, जो MG13 में चल रहा है, वही allocation में चलेगा. Okay. Thank you. Chiragji, your question, please. Yeah. Hi all. मेरा सवाल ये था कि जनरली सिक्योरिटीज का जो भी शेयर्स में वापस करता हूँ सीसी में. चिराग भाई आपकी वॉइस में प्रॉब्लम है. Can we move to the next question? Yeah, guys, we have time only for a couple of more questions because the CC officials need to leave. So we'll wrap up at 7. If anybody has a very pressing question, please raise it. I would like to announce that Brokers Forum has an in-house compliance team. We've just set it up. And if any member has any questions on allocation or anything, please reach out to BVF office through RISP. And if you want, we'll come on any desk, TeamViewer, or any kind of software. Just show me. बोलो मेरा file upload नहीं है, reject होगा, दिखा दो ये काम हम इसीलिए will help you till the last mile if required. And please feel free to reach out to BVF for any activities. This is an idea which was floated by our chairman Lalitji Mundra, and we kind of implemented it. So it should be fun. And sir, a little disclaimer or kind of apology. Kabhi I got a feedback once when I'm holding seminars, kind of saying things which are probably unparliamentary or just too casual or informal. In that case, and it may almost come across as rude. So my apologies. It's not intentional, लेकिन कभी-कभी भावना में बह जाते हैं. So my real never intention to and sometimes just to control the line of discussion
कभी-कभी I need to cut short a few people, and on occasions it may be unwarranted and probably inappropriate. एक अच्छा point होता है और मैं उसको assume कर लेता हूँ अच्छा point नहीं है, but then आदमी काम करता है तो गलती करता है, तो please my apologies in advance. I'll continue doing it till because that's my duty, but I may end up goofing up, so please requesting all my members to have a larger heart when we try to do work. So that is that. Maybe a couple of more questions, Wispy. Yes, sir. Puneet ji. उत्तम जी, एक चीज था, पिछली अपनी जब भी मीटिंग हुई थी सीसी के साथ, तो उसमें एक था मिनिमम एलोकेशन का फंडा, मिनिमम एलोकेशन अमाउंट इज टू बी देयर 20%. नहीं, व्हाट वी हैव शोन इन सेग्रीगेशन रिपोर्ट, हमने जो सेग्रीगेशन में रिपोर्ट किया है क्लाइंट के लिए कुछ भी बैलेंस, तो उतना तो मिनिमम एलोकेशन उस क्लाइंट के लिए होना चाहिए। मैक्सिमम है सर। अच्छा, कहाँ लिखा है ये? क्या फिर से बोलिए सर? What we have shown in segregation report, उतना मिनिमम एलोकेट करना जरूरी है, ये कहाँ लिखा है? ये अपना पिछले जब भी मीटिंग हुए थे ना नहीं सर, वो कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट हो गया, कहीं लिखा हुआ नहीं है नहीं, ये एनसीएल का प्रेजेंटेशन था, हुसैफा ने दिया था, उसमें लिखा हुआ था। ओहो, सीजो इज दैट? सी थोड़ा सर ये भी होता है पटेजा जी, कभी-कभी ना एक इंटरप्रिटेशन होता है 8 महीने बाद, 8 महीने पहले, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन चेंज भी हो जाता है, ठीक है? बिकॉज मेन एक तो होता है जो लिखित है, जो सेबी और एक्सचेंज के सर्कुलर, एमआईएस के सर्कुलर में, वो तो नॉन नेगोशिएबल जो लिख दिया। उसके अलावा इंटरप्रिटेशंस होते हैं जो बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, और इंटरप्रिटेशन में क्या है, जैसे हमने कुछ कहा, अब मैं एमआईएस से बात कर रहा हूँ, उसके बेसिस मैंने इंटरप्रेट करके कुछ कहा, और ऐसे एमआई सेबी का ऑफिशियल से बात करके अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं। उसके बाद कभी-कभी इंटरप्रिटेशन चेंज होता है, विचार बदल जाता है बेस्ड ऑन फीडबैक। सो ऐसे कुछ भी, only the SEBI circulars and written circulars of exchanges are and all the MIs are cast in stone till they are revised. उसके अलावा PPT's presentations are usually interpretations होते हैं, so it has to be treated that way. Having said that, on this specific thing, CJ, if you could clarify now or later, that is there a requirement that whatever is shown as segregation has to be allocated? है ना पुनीत जी, ये सवाल है ना? Yes. Sir, there is one statement from the circular that the amount of collateral allocated shall not exceed the amount of collateral received by TMCM and reported under the client collateral reporting mechanism. It should not exceed. It should not exceed. There's no minimum. There's a max. Yeah. Okay. Puneet ji, I hope that clarifies. Yeah. Okay. Haan. Chirag ji, your question, please. That will be the last question for the day, Chirag. Yeah, sure. उत्तम जी, मेरे को ये मेरा क्वेरी ये था कि जैसे क्लाइंट ने पूरा का पूरा स्टॉक ही प्लेज किया हुआ है और मैंने रिप्लेज किया हुआ है, उस जिसके अगेंस्ट में मेरे को पूरा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मैं एलोकेट करता हूँ मैं फ्रॉम माय प्रोप्राइटरी फंड बैलेंसेस, बट क्या होता है कि जहां पर मेरे को एक्सपोजर लेने की बात आती है तभी बैंक गारंटी का पूरा मेरे को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, बट जहां पर मेरे को एलोकेशन करना होता है वहां पर मेरे को 1/4 ऑफ द पोर्शन ऑफ द बीजी मेरे को एलोकेट करना पड़ता है। तो इज देयर एनी चांसेस कि वो बीजी का मेरे को पूरा लिमिट मैं एलोकेट कर सकता हूं? ये जो बीजी का अनफंडेड पोर्शन कैन बी यूज्ड ओनली फॉर प्रो is a requirement of segregation. It is not a requirement of allocation. It's my understanding. So allocation, you mean to say कि allocation में मैं पूरा allocation says, ये मेरा understanding. Segregation में एक बहुत clarity है कि जो तुम बीजी का funded portion है जो बैंक ने क्रेडिट पे दिया, वो तुम segregation में नहीं दिखा सकते, वो प्रो में दिखाना पड़ेगा। उसमें तो कोई confusion नहीं है। नहीं, उसमें कोई confusion नहीं। तो now allocation में ऐसा कोई requirement कहीं मैंने पढ़ा नहीं। और दूसरा इनफैक्ट एलोकेशन बोलता है कि यदि जैसे क्लाइंट ने चेक दिया तुमको, तुम पहले एलोकेट करो, अपने ओन पैसे से एलोकेट करो, फंडेड तो मेरा ओन पैसा है, सेग्रीगेशन में ओन दिखाया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि एलोकेशन के अंदर कोई ऐसा इस लॉजिक से। तो फिर मेरे को नॉन फंडेड पोर्शन भी क्लाइंट को मैं एलोकेट कर सकता हूँ, यू मीन टू से? मैं फंडेड पोर्शन ओनली फंडेड पोर्शन, मतलब नहीं फंडेड नॉन फंडेड तो कर ही सकते हो, मैं फंडेड की बात कर रहा हूँ, मतलब जो भी है वो वाला आधा या वो वाला आधा, एज द केस में भी मैं पूरा का पूरा मैं कह रहा हूँ पूरा का पूरा बीजी का अमाउंट आप क्लाइंट को एलोकेट कर सकते हो।
एलोकेशन में कर सकता हूँ, सेग्रीगेशन में नहीं कर सकता हूँ. Correct. This is my understanding. Great. But sir, क्योंकि reconfirm क्यों कर लो sir. Sir, reconfirm कर लो जी यार. जी सर, जी Sijo सर. Rohana, if you could. This is the last question. Hello. Yeah, I'm waiting for them to respond. Can anyone please reply? See, there's no restriction on allocation of own money to client, right? Allocation. Allocation of own money to client, no restriction provided the client has the balance. I mean, Yeah, bucket one में है. Yeah. Okay, perfect. So with this, we come to the end of today's webinar. Special thanks to Sijo and Ruana. The kind of patience they have had and answered the questions, hearing it. So really appreciate. All client corporations, all MIIs are always happy, always supportive of the associations when we hold education webinars. And thank you, members. Again, BBF is trying only one thing. We want to reduce non-compliance of ignorance. Non-compliance of intent का तो कुछ भी नहीं कर सकते. वो तो जो बदमाशी करने के मूड में है तो उसको तो क्या करें. But कई जो गलती से मिस्टेक हो जाता है, and if I can use that term, उसके लिए we try to hold education webinars. I hope it's helpful. And often these webinars are, we come to learn from the MIs, and sometimes MI says even we learn while बोले हमने भी ये point सोचा था, ठीक है इसको solve करते हैं. So it's a two-way communication also to a great extent. And thank you everyone for being a part of this program. If there's any query, anything, please feel free to reach out to the association. We got a very dynamic chairman जो हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं. Anybody who knows Lalit ji knows that. ये सच नहीं है. How आपको पता है enthusiastic कि आपके इस सेशन को आपने प्रिपेयर करने के लिए कितना मेहनत किया है वो आई मीन पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता बट हमें पता है इंटरनली. So special thanks to you, Uttam ji. This is amazing, na? Lalit ji meet करके मैं उनकी करूँगा. And Kishore ji and Virender Manskani ji for being on panel with us. And yes, as told by you, we are really thankful to the CCs for their continued support. And thank you all the participants. So with that, we may sign off for the day.